Chandrakant Salunke, founder and president, SME Chamber of India and Federation of Indian SME Associations. I, Shivani, welcome you all to Gujarat Industry and SME Summit, which is focusing on supporting manufacturing and SME sectors for better business growth. This event is a unique platform for all the entrepreneurs to connect with each other and to understand the various developments in the banking, finance, manufacturing, exports, technology, government policies, international markets, logistics, IT and ICT, digital and industrial revolutions, and other aspects which are beneficial to the manufacturing and SME sector. On behalf of the Chamber, we are thankful to all of you for participating in this event. We are also very much thankful to all the sponsors and supporters to make this event a grand success. On behalf of Mr. Salunke, I place token of appreciation for supporting and sponsoring this event by HP with Intel, title sponsor, Gati KWE, lead sponsor, Bank of Baroda, platinum partner, Punjab National Bank, platinum sponsor, Bank of India, gold partner, LIC of India, gold partner, GOTO.com, flexible working partner, Credix, supply chain partner, SBI General of Insurance, insurance partner, Resurgent India, knowledge partner, Drip Capital, Kotak Bank, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, Uptak, print and electronic media partner. Organizations who have supported this event: SME Export Promotion Council, SME Industrial Parks of India, World SME Trade Center, Packaging Industry Association of India, SME Investment Promotion Council, Startups Council of India. So can we have huge round of applause for everyone? Thank you so much. So now, to begin with today's conference, I invite all the dignitaries from the dais to come forward to light the lamp to inaugurate traditionally. So now I request Mr. Chandrakant Salunke, founder and president, SME Chamber of India, to come forward to escort today's chief guest and other dignitaries to light the lamp. Mr. K.T. Patel, CMD, Cascade Packaging Private Limited and National Vice President, Federation of Indian SME Association. Mr. Mahendra Patel, CMD, Mamta Group of Companies. Mr. Natwarlal Patel, CMD, Meghmani Organic Limited. Mr. N.K. Navadia, CMD, Navadia Group of Companies. Mr. Nilesh Chitparia, Director, Kera Vitrified LLP. Mr. Lakhavai Keshwala, CMD, Satyakam Group of Companies. Mr. Sailesh Tripathi, Director, Commercial Channel, HP India. Mr. Rajendra Manipande, General Manager, Bank of India. Also, I would like to invite Mr. Joseph C. Levis Jr., Chairman, India, US SME Business Council, USA Region, and MD and founder, Concord Group Holdings. Can we have huge round of applause for everyone? Also, I would like to invite Mr. Excuse me. Hello. Thank you so much. So I would like to invite all the dignitaries to take their seats on the dais. Mr. Chandrakant Salunke, sir, founder and president, SME Chamber of India.
Mr. K.T. Patel, CMD, Casket Packaging Private Limited and National Vice President, Federation of Indian SME Association. Mr. Mahendra Patel, CMD, Mamta Group of Companies. Mr. Natwarlal Patel, CMD, Meghmani Organic Limited. Mr. N.K. Navadia, CMD, Navadia Group of Companies. Mr. Nilesh Chetparia, Director, Kera Vertified LLP. Mr. Lakhabhai Keshavala, CMD, Satyakam Group of Companies. Mr. Sailesh Tripathi, Director, Commercial Channel, HP India. Also, I would like to invite Mr. Joseph Sir on the dais, please. Can we have a huge round of applause for everyone? Now I would like to invite Mr. Chandrakant Salunke sir to felicitate all the dignitaries. Mr. Kamal Shah, ADDL Industries Commissioner, Government of Gujarat. Mr. K.T. Patel, CMD. Mr. K.T. Patel, CMD, Casket Packaging Private Limited and National Vice President, Federation of Indian SME Association. Can we have a huge round of applause? Mr. Mahendra Patel, CMD, Mamta Group of Companies. Mr. Natwarlal Patel, CMD, Meghmani Organic Limited. Mr. N.K. Navadia, CMD, Navadia Group of Companies. Mr. Nilesh Chetparia, Director, Kera Vertified LLP. Mr. Lakhabhai Keshavala, CMD, Satyakam Group of Companies. Mr. Sailesh Tripathi, Director, Commercial Channel, HP India. Mr. Huafreed Nasarwanji, Chief Commercial Officer, Gati KWT Limited. Mr. Maruk Trivedi, Aftak Media. Mr. Joseph C. Labus Jr., Chairman, India, USA SME Business Council, USA Region, and MD and founder, Concord Group of Holdings. Thank you so much, everyone. Now I would like to invite Mr. K.T. Patel to give a welcome address for all of us. Over to you, sir. Good morning to all. Good morning. Suprabhat. Jai Shri Krishna. Jai Jirendra. Lovely community, business community सब आ गई. Thank you. आज के ये शुभ अवसर पे हिंदी में बोलूँगा क्योंकि to the benefit of all non-Gujarati friends, बीच में गुजराती आ जाए, इंग्लिश भी आ जाए. So bear with me. I welcome all of us to this very good, mutual interesting subject and this symposium. मैं माननीय श्री चंद्रकांत सालुंके जी जो फाउंडर प्रेसिडेंट है एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड बहुत और सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके फाउंडर प्रेसिडेंट वो रहे हैं, उनकी 30-40 साल की ये करियर में उन्होंने ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सेवा की है. उनका तहे दिल से मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ. और गुजरात के बगीचे में से जो महकते हुए फूल है
ऐसे डायस में बिठाए गए सारे दोस्त लोगों को हमने इकट्ठा करके आज यहाँ लाए हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू पिक देम अप एंड आस्क टू कम ओवर हियर, मगर मेरा सबके साथ लंबा एसोसिएशन रहा है और बाय गॉड ग्रेस दे हैड नॉट रिजेक्टेड मी और डिनाइड माय रिक्वेस्ट। सो पहले से सबका स्वागत करते हुए नाम लेते जाऊंगा जिनका नाम मैं जानता हूँ। नटवर भाई पटेल, मेघमणि ऑर्गेनिक लिमिटेड बहुत बड़ा ग्रुप है और उनके एमडी हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है, उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। महेंद्र भाई पटेल, ममता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी वेल नोन फिगर टू ऑल ऑफ गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात ऑल्सो। प्लास्टिक के पायनियर है, प्लास्टिक मशीनरी के पायनियर है। मेरा उनका साथ 40 साल का है। मैंने जब भी वो कहीं काम करते हैं हेल्पिंग हैंड में मुझे ले लेते हैं और इस तरह मेरे भी करियर उनके साथ साथ चलिए। उन्होंने भी यहाँ आके ये ग्रेसफुली ये ओकेजन को बढ़ाया है, उनका भी तहे दिल से स्वागत। फिर मिस्टर एन.के. नावड़िया, अंकलेश्वर एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री गुजरात के पास प्रेसिडेंट, मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, उनके साथ भी मैंने बहुत सालों से काम किया है और हमारा दोस्ताना भी बहुत लंबा चला है, 2-3 दायकों से, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मिस्टर लाखा भाई पेशावाला जो जामनगर से आते हैं और ब्रास इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडस्ट्री अपना नाम गुजरात में कमा रहा है और बहुत अच्छा काम जो गुजरात में हो रहा है उनमें बहुत सारी चीजें उनसे जानने जैसी है, तो ही विल ऑल्सो लाइट अप। मेरे साथ उन्होंने भी काम किया है और उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर मिस्टर जेटकरिया, अभी उनके साथ बात करते हुए पता चला कि 182 देश, 182 नेशन ऑफ वर्ल्ड, उसमें से 180 कंट्रीज में उनका एक्सपोर्ट है। ये इनमें वो इनके एमडी हैं और सारे कंपनी को ये लोग चला रहे हैं, तो उनको पिकअप करके यहाँ लाए हुए हैं। मेरा उनका परिचय आज सुबह से ही हुआ है, मगर मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट करके यहाँ आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो बाहर से आए हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, बैंक के फाइनेंस के मेंबर्स हैं, कुछ सीनियर सिटीजन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, कुछ नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है जो स्मार्ट है, जो हमको रिलैक्स कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, रिजॉइन कर रहे हैं, और फिर हमको जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर है उनको फ्री का एग्जीक्यूटिव बना के कंपनी में बुला रहे हैं। बोले घर पे रह के क्या करोगे, और वॉचडॉग होते हैं हम लोग, तो उसका भी फायदा उनको मिलता है। नो टू पे, फ्री अवेलेबिलिटी, तो उन लोगों का, वो स्मार्ट जनरेशन का भी मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने टाइम निकाल के ये सब चीजों में ध्यान दिया हुआ है और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आए, तो उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गुजरात की कुछ थोड़ी सी बात करना है जिसके ऊपर ये लोग प्रकाश डालेंगे और उसमें क्या क्या आने वाला है वो हमें समझने की जरूरत है। गुजरात is a hub of a lot of industries and lot of products, जैसे जेम्स में ज्वेलरी है हो गया, जैसे डायमंड हो गया, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे क्राफ्ट पेपर हो गया, जैसे ये अपना डाइज एंड इंटरमीडिएट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रो इंडस्ट्री के बेस में पेस्टिसाइड्स हो गया, डेनिम हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजों में गुजरात, सिरेमिक्स हो गया, ग्लास पार्ट्स हो गया, उसमें गुजरात फर्स्ट या सेकंड सभी जगह पे है। और उनकी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश होते हुए भी गुजरात में थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी है,
और वो क्या है, कैसे है, सरकार से क्या मांग रहे हैं, पॉलिसी में क्या चेंज होना चाहिए, वो सब हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आपको सुनाएंगे। हमें भी जानने को मिलेगा, आप सबको भी जानने को मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म से एसएमई चैम्बर, माननीय श्री प्रेसिडेंट साहब और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये बात सरकार तक पहुंचे। दूसरी बात यह है कि गुजरात का जीडीपी डबल डिजिट में चल रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जीडीपी भी डबल डिजिट में चल रहा है। वे ग्रोथ इंजन है, गुजरात वैसे भी है और वो आगे बढ़ रहा है। मगर फिर भी कहीं कहीं गुजरात में भी इन्वेस्टमेंट के लिए तकलीफें आ रही हैं कि गुजरात कुछ महंगा स्टेट होते जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र महंगा होते जा रहा है, गुजरात भी महंगा होते जा रहा है। उसका कुछ रीजन पता करना है, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हमें आज चर्चा करनी है और समझनी है। तो इस बात के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किए हुए सबका स्वागत करते हुए मैं विरमित हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. So now I would like to invite Mr. Chandrakant Salunke for theme presentation and introductory address, as well as to highlight the activities and initiatives of SME Chamber of India and FISA. Can we have huge round of applause for the sir? Thank you. Good morning. Good morning, friends. Good morning. आवाज मोदी साहब तक जानी चाहिए, उनका आज बर्थडे है। Let us pray for his हजारों साल जिए, ऐसे ही भारत देश को आगे लेके। Let's give a big hand for his best wishes. HP and Intel, jointly with Intel, organized today's important event, which is called Gujarat Industry SME Summit. Special support from the Gati, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bank of India, LIC, GoTo.com, Credix, SBI General Insurance, Research in India, Trip Capital, Kotak Bank, Aditya Birla और गुजरात के बगीचे में फूले हुए हमारे सब उद्योगपति और आप भाई और बहनों। Let's give a big hand to the special for the guest participate to this event. केटी साहब ने जैसे कहा कि आज के इस इवेंट के लिए जो गुजरात के बगीचे में खिले हुए उद्योजक है, लेकिन देश का नाम इंटरनेशनल मार्केट में आज कर रहे हैं। जैसे जजबरिया जी का 180 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स है, वैसे हमें महेंद्र भाई है, नटू भाई है, केटी भाई है। सबका काम, सबका जो कंट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ उनके लोकल कंपनी के लिए नहीं, ये राज्य और देश के लिए। तो आज हमारे इंडस्ट्री जो कर रही है काम, इसका हम सही दिल से स्वागत करना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए। Friends, on behalf of SME Chamber of India and Federation of Indian SME Associations, I welcome you all again, and special Joe Lebas, who has come from USA, Florida, to interact with you. SME Chamber of India is playing very important role for the last 29 years, and we are integrating entrepreneurs and industrialists, especially for to interact with each other, to explain what are the opportunities, what are the challenges, what are the trends, what are the benefits available made by the government of India. We are aware that Honorable Prime Minister is playing very important role, not only for the Gujarat but all nation, creating the India's credibility in the international market. So we should take advantage of that also. Today he is celebrating his birthday, and today's on occasion of the birthday, I want to announce a few things. First, at the 72 बर्थडे उनका है, तो आज हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं चेंबर के माध्यम से 7,200 कंपनीज फ्रॉम गुजरात, उनको हम नया एक्सपोर्ट मार्केट देना, 7,200 एंटरप्रेन्योर्स अगले साल तक खड़े करने की कोशिश करें, with the help of all these industries and particularly from the institutions. And 7,200 industries we will identify. Those are looking for international cooperation, those are looking for international collaboration or joint venture technology transfer. We at Mumbai
playing very important role integrating the entrepreneurs, industries, businesses from all over the world. We have a strong network in India and other countries. More than at least 70 to 75 countries we have connections. I have taken a lot of initiatives, a lot of advocacy done, especially for setting up, the SME stock exchange, collateral free loans, change of the definition. When Atal Bihari Vajpayee was a prime minister, that time I requested him when he was a chief guest of my program. I said, हमें छोटों को छोटा ही रखना है क्या? हम जब तक SSI हम गिनते थे, महेंद्र भाई, 2002 के पहले हम SSI गिने जाते थे. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैंने कहा, हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे, कि हमें छोटों को छोटा ही रखना है क्या? इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कुछ तो क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है. तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, SME SSI का ट्रांसफॉर्मेशन. तो उन्होंने उस वक्त इनिशिएटिव लेके पर ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने MSME एक्ट को 2006 में लाया. और 2019 में जब मोदी साहब ने मुझे बुलाया था टू अंडरस्टैंड दी इम्पोर्टेंस ऑफ द SMEs एंड हाउ दे कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल, 2019 दिसंबर 27 दिसंबर में मैंने सजेशन दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. हमारा जो टर्नओवर है, whatever turnover of the SME sector, I think you must be understanding. So the turnover base हमारा जो है वो 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ नहीं चाहिए. It should be equal to international market. So therefore 27 दिसंबर को डिस्कशन हो गया, 6 जनवरी को कमिटी स्थापन हो गई, 6 फरवरी को अनाउंसमेंट हो गया. Now we are getting it there. Another very interesting point I suggested that mid corporate from 251 crore to 1000 crore, our industry should be recognized as a mid corporate. So they should get a benefit from the banking sector, government sector. नहीं तो हमारे घर में बड़ा भाई और बड़ा लड़का होता है, मतला लड़का होता है, छोटा होता है. छोटे की तरफ देखते छोटा है करके, बड़े की तरफ देखते कमाता है करके, बीच वाले में कुछ नहीं होता. So that's why mid corporate को भी अच्छी तरह सहयोग मिलना चाहिए. So friends, I will not talk much now today because I want to hear from all the stalwarts. Those are from the different industries, जैसे महेंद्र भाई है, नथु भाई पटेल जी है, नवाडिया जी है, चतपोरिया जी है, लखा भाई जी है, स्पेशली शैलेश त्रिपाठी से. क्योंकि आज देखिए हम पैंडेमिक में हमें पता चला हमारा रिलेटिव कौन है, हमारा फ्रेंड कौन है, हमारा वेल्यूशन कौन. पैंडेमिक में जब आपको जरूरत थी तब कौन था? टेक्नोलॉजी थी. टेक्नोलॉजी ने, हम वर्क फ्रॉम होम थे तो मैं उसको कहता डूइंग बिजनेस फ्रॉम होम. So when we are doing business from, who has played important technology, and because of the technology, because of telecommunication, because of that only we started discussion, we started running our business, branding, promotion, marketing, सब कुछ किया है. और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस पैंडेमिक में, स्पेशली पैकेजिंग सेक्टर, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल, वैल्यू एडिशन सर्विसेज, and therefore that is the most important. During the pandemic, industry played very important, especially SME sector. Friends, today Honorable Prime Minister is going to launch the logistic policy. Very important logistic policy. आज logistic policy के माध्यम से क्या होगा? आज हमारे जो SME sector को ज़्यादा से ज़्यादा महंगा जो हम services लेते हैं वो कम हो जाएगी. हमारे गति is a logistic partner. आज गति आपको गति शक्ति देंगे. वैसे आज Prime Minister गति शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं. Same way, Gati is also playing very important. So let us take advantage of that services, because most of the industries in SME sector, they are looking transform services, they are looking affordable services, they are looking advanced services. So therefore, SME sector is vital, and we have to create, we have to develop such product which SME sector can take advantage. There are plenty of things to discuss. I will discuss later on also, but somehow. One issue going on currently, discussion going on, वेदांता. गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे और एक ही है. आज यहाँ बिजनेस लगा, वहाँ बिजनेस लगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आधा तो बिजनेस सब देश में चला जाएगा. So let us give back hand to starting the new project here also. Let us take advantage from all the states, not only the states. तो ये जो डिस्कशन है, इंडस्ट्री और बिजनेसेस को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए. हमारी पार्टी बिजनेस पार्टी. आज मंत्री जी आने वाले थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे, तो उनको पार्टी ने उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी कि पाटन जाके वहां कुछ कार्यक्रम करते हैं. सीएम साहब को मिला, सीएम साहब बोले आज मैं आता हूँ, लेकिन कुछ कारण से 4 दिन पहले फोन आया कि नहीं आ सकते, आप डेट चेंज कीजिए. मैंने कहा सर ये इंडस्ट्री का प्रोग्राम है, मैं डेट नहीं चेंज करूंगा.
और स्पेशली आज प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे तो मैं प्रोग्राम नहीं चेंज करूंगा, तो आज से हम लोग इस दिन को उद्योग सद्भावना दिन सेलिब्रेट करेंगे हर साल। तो उद्योग सद्भावना दिन में हम इंटीग्रेशन में नेक्स्ट ईयर में मैं महेंद्र भाई आपके सामने 7,200 कंपनी प्रेजेंट करूंगा, उसके लिए बड़ा हॉल में हम जाएंगे। So this 1 year we are going to work hard, and I suggest those are not member become members. Membership के बिना कुछ नहीं होता हमारे। और second thing, member बनने के बाद advantage लेना चाहिए। Advantage लेंगे तो ही फायदा है, तो ही आप आगे बढ़ोगे। जीतू भाई पटेल से मैं कल मिला हूँ, he is a dynamic entrepreneur। आप इनको मैं next time आपको as a success story present करूँगा। तो कहने की बात है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे कितने हैं कि जिनके पास क्वालिटीज है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, दे आर अनसंग हीरोज, बट वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट अ ब्रांड नेम एट दिस प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अ टाइम एंड अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। आई सजेस्ट आज जो स्पीकर्स है, आप देखेंगे स्पीकर कहाँ से आए हैं, कितने स्पीकर हैं आज। जो लेबास यूएस से आए हैं। व्हाट इज आवर इंटेंशन? इंडिया यूएस एसएमई बिजनेस काउंसिल व्हिच आई एम फाउंडर, we have more than 75,000 companies that shown interest to develop business in the USA. US में कम से कम 25 से 26 स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारे अच्छे रिलेशन। So there are plenty of opportunities, and I know many Gujarat people, many Gujarati, especially Patels, are having the connection there. But we have good connection in the business also. Take advantage. Thank you very much, and all the sponsors for this today's event. And let us hope that the message given by the entrepreneurs we should convey to other members, other entrepreneurs, and to grow more. And India का नाम ऐसे रोशन करेंगे, making India for make for world. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Sailesh Tripathi, Director Commercial Channel HP India, for keynote address, and his topic is MSMEs driving India to an Atmanirbhar future. Can we have a huge round of applause for him? Over to you, sir. So, very good morning to all of you. मैं भी हिंदी इंग्लिश के बीच में बोलना चाहूँगा, गुजराती मुझे नीचे नहीं आती, थोड़े बहुत समझ सकता हूँ। गुजरात से कनेक्शन एचपी का है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द कंपनी केतन पटेल इज फ्रॉम अहमदाबाद, so you know just for that. So अब विजय जो सी एक समय पे थे, he not know more with the HP, but world wide print head उन्होंने किया हुआ। So HP is very well connected to Gujarat. So thank you very much setting up the state. चंद्रकांत सालुंके साहब, केटी पटेल साहब, आपने बहुत बढ़िया बोला। Actually हम लोग थोड़ा दूसरी तरह से बात करते हैं, but today I would like to connect with all of you as a technology partner, as a brand, as a HP company. हम कैसे अपने एमएसएमई भाइयों को इनेबल करें, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। So first of all, thank you very much. You know, the dignitaries on the stage, Mahendra Patel ji, Natwarlal Patel sahab, N.K. Navadia ji, Nitish Jethwalia. I'm very amazed to hear that, you know, 180 country you are exporting already. Lakhi bhai Keswala ji, and Mr. Jo, thank you very much for the part of the event. MSMEs are so critical for the growth of the country. Abhi, Prime Minister of India is there in SCO summit, and he was talking about, and in front of the Chinese Prime Minister. China is known as a global manufacturing hub, and Indian Prime Minister said that, you know, we want India to be the manufacturing hub, and world is looking at us. So the responsibility of the MSMEs are so huge. When we are going to compete with a country like China, with a global standard, we need a lot of innovation, we need a lot of transformation. चंद्रकांत सालुंके साहब ने कहा कि transformation है, I think very good, very auspicious day, मोदी जी का आज बर्थडे है और वो भी आपके प्रदेश जाते हैं, और बहुत बढ़िया, I think very good thought, सालुंके साहब, you know, if we can present by the next year 7,200 new MSME which can contribute to the GDP of the country and to the growth of the country. It's a very good thought. Let us work together how we can step up. So in an era of globalization, when we are talking about MSME, the backbone of that. Can I get a point of view? Is there?
So, first of all, organizing this kind of structured event very important. And corporate, large corporate like us, who are the technology leaders, and the MSMEs of the country has to come on the platform. So, Mr. Salunke, thank you very much for having organizing this, and Chamber of Commerce, Gujarat government, everyone contributing to this. When we are talking about MSMEs, and I said, Modi ji had made a statement, but Gujarat always is poignant. The dignitaries of the state, one, I've been across all the part of the globe. Whenever we talk about diamond, you cannot miss Gujarat. We already having our footprint present across the globe. We need to get upgraded to the next level. We need to get in more and more Surat diamond clusters to develop. That's a job in hand. But I think that leaders in Gujarat already have it. When we talk about petroleum products, we talk about diamond, we talk about a lot of Gujarat is the leader from an MSME point of view. So you guys already one notch up from the other places. Country का 30% GDP MSME से आता है. Gujarat 40%. So the contribution from point of view Gujarat is already on a higher side from MSME. Now, आज की तारीख में ये मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से. When MSMEs का पेन क्या है? क्योंकि देखो आपको you have to compete with the best of the world. Now, when last 3 years was very different in our life, it has given us a very different learning for us. Pandemic was very mankind के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, but definitely pandemic taught us a different way of leading the life. During the pandemic, we learned, सालों के सामने उसको टच किया कि work from home, हम उसको बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट, कोलैबोरेटिव वर्कफोर्स, बट एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई भी विपदा या कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है मैनकाइंड पे, उसका सॉल्यूशन फिर हमें निकालना. So and I'll tell you this example. When we got into the pandemic, started working from home, it was almost impossible. How did we survive? But then what happened? We understood, no, this is the way of working. Within no time, India understood that. We understood, no, we require connectivity. We require devices. So I'll tell you how today's environment versus pre-pandemic. Pre-pandemic, कोई भी मीटिंग होती थी, हमें ये लगता था everyone has to be present in the office face to face. But this is the era. Wherever you are part of the globe, but if you have to collaborate, you can come with a click of a second. You need the ecosystem created for that. As an MSME, this is very important. Now we need to come up with a new phase of the thing. Adoption एक चीज होती है, उसको करना पड़ेगा. I'll tell you an example. I was attending a meeting. I was on a moving car. I was having a good camera. I was having a good headphone. घर पे मेरे पास 2 स्क्रीन भी हैं. बड़ी स्क्रीन में मैं अपनी एक्सेल देखता हूँ, उस पे टाइप करता हूँ. वेब कैमरा अच्छा वाला चाहिए. You have to get the global call attended. Your face should be very clearly visible. So within no time, we got into, at any place you can have a setup which was there in your office. And from an MSME point of view, this is very important. We adopt these technologies. We get ready for the future. When you have to compete to the world, you have to be the global hub to the world, which the vision of our Honorable Prime Minister. This is very critical. How you adopt the technology very fast. So the challenges for the MSMEs are that we are working with one domain, and then we don't understand technology in the way that people talk about. The kind of work we want to do there, the HP wants to do, we want to come as a bridge there. We understand, HP understand your challenges, and I'm telling you in all confidence. And we are building solution to drive your digital transformation journey. As a company, we are doing acquiring. We just acquired, and I can talk now. In fact, now we are public news. Poly करके company है, जो conferencing solution देती है. Because we cannot be only a device, laptop, desktop. हमें पता है कि आज की तारीख में device का isolation में कोई काम, device की usage पे ज़्यादा काम. तो आज पूरा conferencing solution HP आपको लेकर. We acquired it. We acquired another company called TerraDigi, and we are in that. The power of TerraDigi software is that
they can enhance the computing power. आपके साधारण जो लैपटॉप है उसकी प्रोसेसिंग को सॉफ्टवेयर के थ्रू बढ़ा सकते हैं. So all those acquisition we are doing for betterment and providing a better solution for that. So we are talking about empowering you. I think very important, and why, and somebody was talking to me, and I was watching a video a couple of days back. Our own Sri Mukesh Ambani ji, he was talking about, he start from the micro, then he become a small SME. Then we all know, and this is he's talking about just 40 years of journey. So I think if we work with the right frame of mind, with the right empowerment of the technology, which is my work, we can part of the journey which we have seen in the past. See, एक important point है, we need to see how the change will happen. This is very important, and this is the only thing which I want to talk about. See, पहले क्या होता था? See, when you adopt the technology, there are a lot of things happen. There are the security threats. There are the आज SME को समझ में नहीं आता. I don't have a IT manager. I am a small enterprise. मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं एक IT setup बनाऊं. So HP as a company can come and talk of that. Okay, we are working in that direction. We'll give you a software which can work all the manageability feature of your. We can manage entire setup for you. We can give you the pre-alert. अगर किसी कंप्यूटर में MD साहब का लैपटॉप है और उसकी हार्ड डिस्क में कोई फेलियर आने वाला है, we can give that pre-alert so that आपका काम uninterrupted, so that you get all those things. So as a technology, we are working in all the spaces, and we can rest assured that you should be talking about that how we can seamless. I want to touch upon one more thing. We as a company coming as device as a service, and you would have heard this name DAS. We are talking about कि आप कंप्यूटर मत खरीदो. आपको आज मुझे नहीं पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग कंप्यूटर चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, मुझे ग्रो करना है. मैं कहता हूँ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपको काम क्या करना है? मुझे कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, मुझे हाइब्रिड वर्क सर्विसिंग करनी है, मुझे एक्सपोर्ट के लिए कुछ काम करना है. मेरी ये रिक्वायरमेंट, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर, ये मेरी रिक्वायरमेंट. I can give you a solution, and that is we are working. Okay, X industry, I understood your requirement. Just tell, I give you per seat per month basis. Okay, let us sign up for 8 months, 1 year, and you have to pay. You need not to worry about the capex. All of you understand the capex. We right now the world is moving on the OPEX. But I will give you the solution with all kind of solutions which you are looking for with a per seat basis. And you can always scale up or scale down depending upon the how industry work. So those kind of flexibility we are trying to create. The pre-pandemic and post-pandemic I was talking about, there's a whole lot of change, and these changes which are bringing to the industry for you. My request to all of you, please, reach out to us, and Salunke sir, will also try to reach out to in a structured way and with the all good ambition that how we can help in contributing in your group, how we can help empowering you so that as a country, MSME for that country, MSME for that India should be equal in the benchmark in anywhere across the world. That's our vision. So with this, I want to thank everyone. Need not to say, our partnership will go strong. I would like to be the part of when we will present 7,200 SMEs to the leaders. HP is the #1 brand. We are every third piece sold in the country is HP. The 40%, even 2.5, every second 2.5 printers sold in the country is the HP. We are talking about, and that's all about. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Mahendra Patel, CMD Mamta Group of Companies, for addressing all of us. Can we have a huge round of applause for him? Good morning. I will not name everybody on the dais, but Chandrakant Bhai, the man behind this
gathering and all my friends on the dais. And I will also not repeat whatever has been said earlier, so that we have to utilize the time better. That is the first sign of the first step of the efficiency of our working. MSME has been, somebody quoted our MSME size and everything. You know, internationally, if you really look at the statistics, I'm sure the economist Shardaman will probably endorse that. In almost every country, including the developed countries, the MSME is the largest contribution to the GDP of any nation, anywhere between 50 to 80%. That means MSME is not simply manufacturing; it is also MSME in the service sector, the other sector, food sector, etc., etc. They are all MSMEs. Here, of course, we are focusing more on the manufacturing side of the MSME. We are here, but I think if Chandrakant Bhai has to achieve his 70 to 100 MSME target, then he'll have to expand the definition beyond manufacturing to the service sector also. Otherwise, it will be difficult. Now, if you look at it, I come from the manufacturing side. We make machineries for plastic processing, all kinds of plastic processing, starting from injection molding, extrusion, blow molding, film extrusion, compounding, etc. And as well as the packaging of all kinds, starting from flexible packaging to bottling lines to tin machines, can machines, even cardboard packing and all that. I would just like to mention a couple of the points here. You know, we must recall, I would like to recall our Honorable Prime Minister's 5 Pran, which he said in the 15th August address. First is that we have to look at developed India over the next 25 years. And many of you will be there for 25 years. We may not be there, Prime Minister may not be there, but we have to leave this thought as a driving force that we have to become a developed India. There should be no servility. We have to forget about all the vestiges of our so-called gulami and all that. And from the industry point of view, the servility is also that we still have a feeling, with due respect to my American friend, and I will tell you why I'm saying that. And you are from Florida, you'll be glad to know why. I have an American JD also. You see, we look at the technology from abroad as being superior to us. There was a time when it was so, but it is no longer true. I have done many joint ventures in my career. Right now I have 3. Most of you know, 2 German, 1 American. But for us, I look at joint venture as a window into my export market. I'm not doing it for considering that their technology is superior in any way. In fact, with all my joint venture, including the Americans, Indian company has actually made new designs and new products for their markets. And we supply let's say almost 30% of the production from India into America or into Germany. And they sell it under their name. And those particular products they do not make in their country any longer. This has been a story for the last 10, 15 years. And over and above that, my parent company, Mamta Machinery, you would be happy to know that we have a factory in Florida, in Paddington, near Tampa. But I employ about 22 people. Not very large, it is still it is a what do you call SME by the American standard. And doing about we are doing about 10 million right this year. It's only a 7-year-old story. And we have taken this is what I want to tell that there is a lot of room for SMEs to go abroad and succeed and excel with our technologies. Mamta Machinery has got
4 patents right now and 2 more pending. And we compete worldwide with America, with German and Japanese. In packaging machinery, Japanese and Germans are considered the industry standard. And now, as per one of the American magazine survey a couple of years back, Mamta is the top 5 global name, recognized name in packaging. This is not to talk about Mamta. This is to tell all of you that anybody has any hesitation, please believe in what our Honorable Prime Minister says about that we are the best. There is no question about it. And we should have pride in our heritage. That's what also he said. And we have the heritage of more than 10,000 years of history behind us, where India at one time was the developed country in the whole world. So we should be equally proud. Then it is unity and solidarity. Chandrakant has been working on all these associations, promoting various associations, various grouping, and we are doing more. That is the unity. But with the unity, we need a solidarity in a sense that when we are talking to other countries, other nations, or other markets, we should not be very clear in not running down anybody, any competitor of any kind. We are all one. We are all Indian companies. All Indian companies do well. No Gujarati, no Maharashtrian, no Delhi, no Tamil Nadu, nothing. We are Indian and all Indian companies do well. And we have to stand together for that purpose. And the lastly, which I really like our Prime Minister's front, is fulfilling one's destiny. And our destiny as a citizen is to work for country's upliftment, work for helping our citizens, and to do and leave a mark in whatever we do, as well as observe our rights. And coming to the rights, I am coming to some of the what we call the burning questions. One burning question is the littering habit that we have. And I'm sure none of you can honestly say that you don't litter. We all do. I don't believe it. I think I don't litter, but if you really look at it deep inside, somewhere, somebody, if nothing else, when you tear off the sachet of the sugar, a corner is thrown somewhere. That is still a littering. We need to learn that if we want clean India, a really Swachh India, then we have to get out of this. And that will solve a lot of the problems, because one of the issues of littering has exaggerated the problem of plastic. Single-use plastic, the biggest problem that we have is the littering, not so much the plastic per se. Because there are already solutions available. In the developed world, if you go to, most of you go to Europe, do you really see any plastic on the road? Or many of you have traveled. Have you noticed anywhere? No, because they put it in the right place. And then there is a collection system, which is a civic authority, that unfortunately, we don't have a minister, otherwise I would tell him on his face, that the authorities do not discharge their duties also equally of collecting and supplying it to the industry. Because recycling solutions for all materials are available. And all materials in India have traditionally been recycled to a very large degree. We don't realize, unfortunately, the plastic became, not just because I'm interested in plastic, but it became a problem because it became visible. Internationally, the UN report also says that the amount of plastic in the sea, which has been so much highlighted now, that is less than 4% of the rest of the garbage. Less than 4%. And everybody believes that if plastic is choking the oceans. There is so much other garbage in the world that people don't notice, because they don't fly with the wind, and they don't go in the areas where the cows are running loose and eat them. So, but coming back,
an opportunity is there for the lot of SMEs to go in for recycling. Recycling solutions of all plastic materials are available. One of the best solutions available, and which is a good opportunity for SMEs, which is happening in other part of other countries, is to collect the plastic and reprocess them to use them for a longer term things like many of you have been to Germany, I'm sure. Most of you must have been. If you are in industry, you have to go to Germany. It's a mecca of technology. Next time you go, please notice the new pavements which are there on the footpath or the posts which are used for fencing of the houses. If you look carefully, almost all is from reprocessed plastic. All. Since many years. That is their biggest solution to the world, and the machines are available. And they are being made in India also. Because if you make the paving blocks, they make it about 100 millimeter thick and maybe 600 by 600 or 800 by 800. And you put them there, they are far more hard wearing because there are contaminants are there, which are soil, metal, everything. It actually makes it much harder. So it is very, very good wearing surface for walking. Better than stone, almost. For example. But this is thing we don't notice. The fencing, all public park fencing, everything, all public park benches and furniture, the swings, the children, everything is mostly plastic. We have presented as an industry. There are industry exhibitions for plastics machinery and plastic industry, where I am chairman of the association, National Association. In the exhibition last year, 2 years before the pandemic, 3 years ago, we have demonstrated a small plant where all the kachra in the exhibition itself was collected, all the films and bottles and caps and whatnot, even the pan parag and all those tobacco, which is the biggest, and I'm sure half the people use them and throw them away. All these were collected and put there, right there in the exhibition, in the machine. The pallets were made, and then from there we could show that you can mold the benches for schools, for example. We have already shown, and Niti Aayog, Mr. Amitabh Kant was there that time, and he is now, we have been following up. They are now going to make it a policy that all the governments could have furniture from recycled plastics. So then there is a good solution, and it's very long lasting. And it is fairly heavy, so people cannot throw it around and use it for, tear it apart and then use it for eating. When there are riots, the school and other furniture get destroyed for fighting with each other. So this is a good prevention for doing that, for example. These are the opportunities I'm just outlining, which we don't notice. And I'm sure many of you MSMEs will have that idea to do that. Coming to other things of machineries and other things, in every industry, there are basically a primary machine, which is the major process where the essential part of the manufacturing takes place. Then there are machinery which are required for input and for output, and plus there are machines and equipment required for additives and additional things. If you make a food processing, for example, for making breads, so we supply the bread packing machines around. So when you are making bread, there is a flour in terms of tons, but then you require to add the salt, little emulsifier, little bit of flavor, the vanilla, things that whatnot. Now all those things are small machines; they are ancillaries. All such machines are known as ancillaries. There is not a main equipment, and most ancillaries are made by MSME in India, in the world anyway. Now there is an opportunity which we need to, which any of you can actually work on it and develop. Right now, a lot of these ancillaries for food are being imported. Small things. For small things,
people are being they are being imported. You might say that when I talk about it and I'm already in the business, why don't I do it? Well, I wish I was 20 years younger. Then I would have done that. But right now, I'm giving this as an idea that a lot of our youngsters have to start thinking in terms of wider aspects of the industry, that the small things are very important. Ultimately, with a pinch of salt is what makes the taste, and not the big thing. So that is where the small machines, very important machines, somebody is here for testing equipments. Now, testing equipments are also required for the absolute quality of the ingredients in terms of weight, in terms of its texture, in terms of its fineness, etc. etc. This is the food industry part. If you take even dyes and chemicals, what the guy is making, he will agree that they make all these big vessels and mix other things. But there are small things about adding one particular dye and a particular drops, not even by a spoon, by a drop. Right? So all these things. Now that droplet, the size of the droplet is also varies in terms of the viscosity, in terms of its color index, and so on and so forth. All these things are monitored and made by small machines, small additives, small ancillaries, small auxiliaries. For example, they would, let's say not this, but food or additives for dyes also have to be cooled or chilled before adding. So there are small chillers for that. While the other things, somewhere else you might have to heat them at a particular temperature and so forth. And they are very small machines, specific machines for doing same thing in plastics also. When you are adding color to plastic for its processing, it has to be added in very precise quantity, in a small quantity relative to the major production. And these are all ancillaries. So ancillaries and auxiliaries is a very big field for any industry. You think about it, any industry, and I have studied a lot of them in almost all industries, and auxiliaries are the one which people don't think of. And that is where the countries like Germany and Switzerland, for example, Switzerland, just think about it. Many of you have been to international travel, and you might have seen a laundry string over the bathtub in the bathroom. How many have seen that? Have you seen that you do that, and then it will retract by itself with a spring mechanism. A small company in a corner of Switzerland, but making millions of francs of business. Now, these are the kind of things we as MSME in India need to think about. But we need that also. Look at the apartments that we have in India now, all over the place. Every apartment, you go to even a city like Bombay, where you have crores, 100 crore apartment and 200 crore, and then at the back in the balcony you will see all the dirty laundry hanging, and it's not dirty but washed laundry drying and things like that. What's this? It takes away the beauty of the cities and of our surroundings. Why should we do that? Why should we put up with that? Find a solution. Very easy. If somebody can make some kind of a laundry line in a way which is retractable and which can be put on the wall of the side under the ceiling of the balcony where it is not so visible, and you still take benefit of our climate because of the heat, the hot climate and the sun, everything which is good for drying, etc., which is the intelligent use of solar energy. But so these are the kind of things which we need to think, and I think opportunities are endless. I can go on and go on for many for many examples. All I want to say is I will just paraphrase one of the sayings, कि हर पल में कुछ न कुछ नई चीज होती है. हर पल में कुछ न कुछ नई चीज होती है. अगर भूल गए
तो याद है, अगर मान लिए तो धंधा है। So, friends, with this, I thank you for the organization to call me, and thank you for your patient hearing. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Shrikant Badwe, Chairman Badwe Industries, on the dais, please. Can we have huge round of applause for him? Moving on, I would like to invite Mr. Natwarlal Patel, CMD Make Money Organics Limited, for addressing all of us. Can we have huge round of applause? Thank you. Respected Chandrakant bhai, friends on dais and friends in audience, as I know a lot of people here and all are from the different segments. Mahendra bhai really shown the opportunity to us, and particularly for the SME. Chandrakant bhai, I think this is the first time such a organized event is held in Ahmedabad for SME sector, and it was need of day. Why I want to tell? Because as rightly said that Nilesh bhai is that as a president he was talking that when he will talk, Morbi is exporting to 180 countries. It was not the case in before 10 years. And we all were importing ceramics from abroad, particularly Europe. And today, the European people, Spanish people and Italian people are working in Morbi on a manufacturing line. That is the challenge they have given to the international market. And today, we are talking on challenges in manufacturing, vice versa, opportunity also. Mahendra bhai has talked in detail about plastic industry, and he is the Bhisma Pitamaha of plastic industry, because I have seen him since 1975 when the Mamta engineering started, then Klockner, Windsor, then the one by one, every collaboration joint venture came. And after 10, 15 years, he reduced the equity and he said bye-bye and go for the else one. So he has got an excellent knowledge on joint venture. We as a SME in India, as we all know that SME is a backbone of India. In spite of that, even all the countries, SME is a backbone because they are the basic providers, not only service, but the stuff provided to the big people. Today, in the audience also, my friends are sitting, and Mahesh Bhai is supplying a product to the multinational company by using the one big company. Ramesh Bhai is doing the same thing in pharma. And when we talk of ceramic, they are the now leaders in ceramic quality, cost, and supply positions. Similar way, Surat, they were into the diamond. And when nobody was buying the diamond due to the price, they come up with the lab-grown diamond technology. They learn so fast. Mahendra bhai, I will tell you today, there are 25 manufacturers of the lab-grown diamond, which cost them not more than 20% of their natural diamond, having the same specification. 10% having the same specification, and all parts are supplied by the SME people. Engineering, electronics, software, and hardware. To combine all these things on a one platform, today Surat is #1 in the world.
Similar way in pharma, in chemical, agriculture. What we are doing, agriculture, all the stuffs we are producing in a row positions. Now the agro processing in 21st century, the opportunities too big. I think 1 week before I was traveling to Udaipur and my friend's daughter was also with me. I asked a very small question, Beta, what you would like to eat? He said, Balaji. I said, Balaji. Then Balaji was not available on the way. So he said, then Gopal. So food processing area, the rate of growth in India, everybody is converting peanuts, soya, all the stuff, potato, whatever the excess material was there and the price was dropping down and farmers were not earning. Today by using the food processing technology, SME people are generating or growing in such a big way, particularly for food processing. As I know, Balaji and Gopal family both together, they started tavda, frying the paper, right? And today, the valuation of Balaji more than 12,000 crores in span of 15 years. So that is the scope of food processing, scope of ceramic, scope in diamond. Farmer, we all know, because a lot of people are from farmer. So what to talk? Or chemical. What to talk? Because we are the, I think, supplying to each and every country. But now, to be a competitive, it is a challenge. We have to do it very fast. Now, when it comes to the weakness, as a SME, we have a lot of weakness because government supports by policy. We don't need money. We need a very transparent, simple policy by which we cannot spend our time and energy. Similar way, I think Chandrakant Bhai has already talked on logistic cost. Let us hope government will come out with the logistic policy. Virtue of that, what we are facing the problem since last 3 years, our logistic cost for international as well as for the domestic has increased by 3-fold to the 5-fold. To be a competitive, today we cannot spend our money on logistics to that much. We all know. So we are all looking for the new logistic policy. Similar way, the GST. I know the producer in Jamnagar or Junagadh, say peanut producer or small SME manufacturers in a different category, they are not known to the lot of change in GST. How can we expect the chartered accountant in Junagadh will provide the change on each and every day? N number of laws are changing. So they are facing a big problem. So opportunity is enormous, but similar, the weakness, we don't need subsidy. And rightly, I think our Prime Minister has came out with the PLI scheme, which is production link incentive. You produce more, reduce your cost, be competitive, we will support you by the incentive. That is the right approach. I think government is already carved PLI for 10 segments, and they are also going to expand it for the other segments. But challenges from the government laws, challenges from the technology. We don't need to travel a lot. Like Tripathi ji has rightly said, that now technology is available. You can sit in your office and talk to Brazil and Colombia and Ecuador and get your work done by using that technology. So we have to upgrade our knowledge by technology. I think technology providers are there and we can use that tools. I think Morbi has used that tools very nicely because I know a lot of my relatives are there.
Say, I will talk you on a very simple mode on filter press. They were importing the entire filter press. Now, all the parts are available in Morbi. So they can produce, I think, more than 200% what they were producing before 5 years. So by virtue of that, they can reduce the cost and they become a world leader. I think on all the segments, all the things are open. Not only, say, I will explain the last example. Mahendra, my friend and my partner, Ashish Ruparkar, his family, his cousin is manufacturing toys. Before 3 years, everybody was talking toys manufacturing. He started manufacturing toys. Today, he's a supplier for Hamley. And Hamley people are asking that how much you can supply. So there are n number of segments unexplored. And Gujarat is a right platform. I don't say Gujarat. India is a right platform. 21st century, we are going to be a hub of manufacturing and service providing. As such, in service providing, India is leader across the globe. Now the manufacturing and China plus policy, because world is looking for China plus supply, one more, and India is number one on that front. So with these small notes, I am very happy that you invited me to share my thought. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. N.K. Navadia, CMT Navadia Group of Companies, for addressing all of us. Can we have used round of applause for him? Thank you. Respected all present in this auditorium. चंद्रकांत भाई को सुनते मुझे एक पश्चिम के चिंतक की बात याद आ गई कि all positive thinkers have a solution of every problem and all negative thinkers have a problem in every solution. So चंद्रकांत भाई ने जो बात बताई वो पॉजिटिव, वो थिंक ही पॉजिटिव करते हैं, ये सब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना है और वही सही रास्ता है कि उसी रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। मुझे दो बात से याद आती है कि हम आज जिस बात के लिए चिंता करने इकट्ठे हुए, कल के गुजरात के अखबार में, गुजराती अखबार में एडिटोरियल रिपोर्ट प्रसिद्ध हुआ है। उसमें अपने कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर का एक चिंता उसने जो जताई, उसके पर वो रिपोर्ट, एडिटोरियल रिपोर्ट बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने बोला कि ये विदेश वाले हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने इच्छुक है, पर हमारे भारतवासी क्यों नहीं है। ये कल के एडिटोरियल रिपोर्ट में लिखा है उसने, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था। लेकिन हम भारतवासियों की हमारे दिल में जो है और हमारी जो मानसिकता है वही, हमें कोई सोसाइटी में या कोई जगह, कोई गांव में एक मकान लेना है तो हम जाके जो रहने वाला है उसको पूछते हैं क्या इधर लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी बराबर है, पानी बराबर है, अगल बगल में एंटरटेनमेंट का कुछ है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, हर चीज हम पूछते हैं। यदि वहां रहने वाला ऐसा बोलता है कि यहाँ बहुत मजा है, बहुत आनंद आता है रहने, तो हम मकान परचेज करते। ये हमारी मानसिकता है पूरे भारतवासी। और उसमें से कोई भी ऐसा बोलेगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम है तो हम उस सोसाइटी में मकान लेना छोड़ते हैं। तो वो बिल्डर की वजह से वो मकान या कुछ भी बिल्डिंग बिक्री नहीं हो रहा है, लेकिन जो वहां रहते हैं वही ब्रांड एम्बेसडर है, वो बिल्डर, वही लोग बोलते हैं कि यहाँ रहने जैसे आप आओ, और दूसरे लोग आते हैं वही लोग। तो हमने जब ये 85 से मैं हर गुजरात की गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव में, तो मैंने देखा अब दो चीज आज आपके सामने मुझे ये बात करनी है
नरेंद्र भाई का बर्थडे भी है कि इंडस्ट्रीज को हमें गुजरात में या महाराष्ट्र में आगे बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करूंगा, मैं उस सेक्टर से आता हूँ, दूसरे तो सब लोग ये बात करेंगे कि उस टाइम जब मैं नरेंद्र भाई ने इधर वैसे फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर के पद के शपथ लिया, उसी टाइम केटी हमारे साथ थे, मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट था और हमारी एक मीट हुई, ऐसे ही गेट टुगेदर बहुत बड़ा। उसमें नरेंद्र भाई ने पूछा कि इंडस्ट्री, गुजरात की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। उस टाइम एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो हमने ऐसे बोल दिया पोडियम से कि देखो अर्लियर डेज में जब हम औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे थे और जहां डेवलपमेंट हो रहा था, उसी वक्त हम बॉयलर है, स्टीम बॉयलर, उनको बहुत बड़ा राक्षस मानते थे और बहुत बड़ा एक इंजन मान, और उसी से ही हम चलते थे कि ये बहुत बड़ी उस डेंजरस है और ये सब हो रहा है। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि केमिकल इंडस्ट्री और हर सेक्टर के अंदर वो करीबन 4-5 किलो प्रेशर से वर्क करता होगा या 10 किलो से, लेकिन इंडस्ट्री में 25 kg प्रेशर से हम रिएक्शन ले रहे हैं, और उन रिएक्टर को सर्टिफाइड करने की आपने जिम्मेदारी चार्टर्ड इंजीनियर्स को दी है, प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन बॉयलर के केस के अंदर सदियों से हमारा चला आ रहा है, वर्षों से, कि उसके लिए बॉयलर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा और उनको हमें पीछे जाना पड़ेगा तभी हम बॉयलर कर सकते हैं। नरेंद्र भाई ने ये बात सुनी और बॉयलर एक्ट को अमेंड कर दिया, तो ये सबसे पहली बात। और इस बात को उसने दिल्ली में कॉन्क्लेव में भी कहा कि इंडस्ट्री ने प्रॉब्लम हमें हमारे सामने रखा और हमने अमेंड कर दिया। आज उसका बर्थडे है, मैं उस घटना को याद कर रहा हूँ। और ऐसा ही हमारे चीफ मिनिस्टर अभी भूपेंद्र भाई पटेल आज नहीं आ पाए, अदरवाइज मुझे पब्लिकली उनको थैंक्स बोलना था। 15 जुलाई को उनका बर्थडे था। रमेश भाई, महेश भाई, हम सब लोग पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर इतने बिजी होने के बावजूद, पहली बार मैं इतने 85 से वर्क कर रहा हूँ, किसी एक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को 1 घंटे तक बैठ के सब गवर्नमेंट के सीनियर, उनकी पूरी सीएमओ, सब सीनियर ऑफिसर और हमें जो कंसर्न थे जीआईडीसी और जीपीसीबी, सबके सीनियर्स को साथ में लेके बैठे और हमसे बात की। बोलिए, हम बोलते गए, उसने आधे पौने घंटे तक सुना हमें। उसमें एक बात हमने, बहुत सी पाइपलाइन में, लेकिन एक बात पर हमने उसको बोला कि पूरे हिंदुस्तान में केमिकल इंडस्ट्री में ये ऑडिट वाला है नहीं, सिर्फ गुजरात में ही है, और वो हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है। और हमारे सर्टेन फ्रेंड्स ने, इंस्टीट्यूशन ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन के लिए भी अप्लाई किया कि दूसरी जगह नहीं है तो इधर गुजरात में, पर हाईकोर्ट ने ना बोला, नहीं है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने चीफ मिनिस्टर को बोला कि हम एग्री होता है, हाईकोर्ट ने बोला है तभी हम चेंज नहीं कर सकते, और 2 बार, दूसरी बार भी रिव्यू करने को बोला, ना बोला, तो हम एग्री है। लेकिन हाईकोर्ट ने कैसे ऑडिट करना उसके बारे में नहीं बोला, तो हमें कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। और आप जो सीसीए देते हो अपने प्रोडक्शन के लिए केमिकल इंडस्ट्री में, उसमें कंडीशन लिखिए, सिर्फ उसका ही ऑडिट करना चाहिए। दूसरी ऑडिट क्यों? दूसरी ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरे इंजीनियर है, इनकम टैक्स है, दूसरे डिपार्टमेंट, ये क्यों करना है? ये इधर से सीक्रेट लेके वो ऑडिटर आता है, इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर उधर, उधर से उधर, कैसे चलेगा? चीफ मिनिस्टर ने बहुत हंसते हुए एक ही सेकंड में जीपीसीबी के चेयरमैन को आदेश दे दिया, ऐसे मुंह हिला के हम देखते ही रह गए। और 1 हफ्ते पहले ये ऑडिटर्स के लिए गाइडलाइन, ये मुख्यमंत्री की हो गई है, ये आज गुजरात में हो रहा है। वही पॉजिटिव थिंकिंग वही है। इंडस्ट्री को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऐसे जब ये हम सीनियर्स के साथ बात करते हैं, जो भी अपने राजनेताओं उनके साथ बात करते हैं, तभी हम कैसे, हमें अपने आइडिया, विचार, हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। चंद्रकांत भाई जैसे
जैसे मुझे मैं सोचता हूँ कि कंट्री लेवल पर कैसे आगे बढ़े, तो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे सेमिनार कि हम चाइना के साथ, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, उनके बारे में बताऊं। 1996 में वर्ल्ड का जो टोटल एक्सपोर्ट करने वाली 10 कंट्रियां थी, उसमें चाइना का नाम नहीं था 1996 में। और 2014 में वो सबसे नंबर 1 पर था, आज भी एक्सपोर्ट। ये कैसे हुआ? हम 10 में नहीं है, पर ये कैसे हुआ? चाइना ने जो पहले 10 में नहीं था वो कैसे पहुंचा? तो उसका सब रिपोर्ट हमने पढ़ा, उसमें मिला कि उसके जो एकेडमिशियन इंस्टीट्यूट थे, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, और जितने यंग स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, ये सब लोगों ने मिलके ऐसी एक माहौल बनाया और रिसर्च का काम शुरू किया। हर चीज का प्रोसेस डेवलपमेंट उसने किया। उसने नए मॉलिक्यूल की बात नहीं की, उसने इन्वेंशन भी नहीं किया। नए मॉलिक्यूल की बात आती है केमिकल इंडस्ट्री में, तभी हम पश्चिम की ओर भी देखते हैं और वही लोग करते हैं। लेकिन चाइना ने उसे सब्स्टिट्यूट करते हुए कुछ न कुछ नए प्रोसेस डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली और उससे आगे बढ़ने कॉस्ट इफेक्टिव, ये सब उनके प्रोफेसर और जितने भी यंग पर्सन थे उन्होंने किया और इंडस्ट्री को सेल किया, और उसकी वजह से वो प्रोडक्शन के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर आगे बढ़े। हमें यदि एक्सपोर्ट के अंदर आगे बढ़ना है तो चाइना के रूट पर ही हमें आगे जाना। हमने अभी एक एकेडमिक का चल रहा था, उसमें वही बोला कि हमारे प्रोफेसर 2-3 घंटे काम करते हैं, मेरे यंग स्टूडेंट है, उनको भी हम आगे लेके कैसे जा सकते हैं। सब मिलके आप तैयार करो, हम इंडस्ट्री सब तैयार है, ये सब हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एमएसए भी इंडस्ट्री को ये सब करना ही पड़ेगा। और उसके साथ दूसरी चीज है, इंडस्ट्री, हम जब केमिकल इंडस्ट्री लगाते हैं तभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, एनवायरमेंट की बात आती है। तो एनवायरमेंट की जब भी बात आती है तभी हर लोग सोचते हैं कि भाई हम वी आर पॉल्यूटर और हम सब बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही में आप देखो तो जब 1998 में हाईकोर्ट एक्टिव हुआ, बराबर, उस टाइम हाईकोर्ट ने स्ट्रिंजेंट व्यू लिया कि भी ये नहीं चलेगा। ऐसे पर एनवायरमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1988 से, लेकिन 1998 में हाईकोर्ट ने, जब गुजरात हाईकोर्ट ने लिया, और उसी में से स्लोली इंडस्ट्री काम करने लगी। और मैं खुद बोल रहा हूं कि इन अर्लियर डेज बिफोर 98, हम जब लोग ऐसे ही अनट्रीटेड एफ्लुएंट स्टॉक वाटर ड्रेनेज में बहाते थे नदी और कहीं भी जाता था, तभी हमारे पास एक स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने एनवायरमेंट की केयर शुरू की, हाईकोर्ट के कहने के बाद, और उसी के बाद आज मैं हर केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट को देखता हूं कि 2-3 बंगले हैं, 4-5 गाड़ियां हैं, ये चेंज हो चुका है। यदि हम एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इस गॉड की ओर से रिवार्ड आता ही है। और ये सब गुजरात हो या महाराष्ट्र, ये 2 बड़े स्टेट है सालों में देखो, हर ये 2 स्टेट बड़े हैं कि जो लोग केमिकल के अंदर आज लीडर है और वहीं से होने वाला। और चाइना को हम यदि बीट कर सकते हैं तो अकेला एक ही सेक्टर है, वो केमिकल सेक्टर, और उससे आगे भी जा सकते हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर स्टडी किया है, हमें मालूम पड़ा है हम कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मुझे आज का विषय दिया गया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है, हैजार्डस वेस्ट से लेकर हर चीज का, वो हमें बंद करना पड़ेगा। और वो बंद करने के लिए हर एस्टेट में, हर क्लस्टर में हमें बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनवायरमेंटल, सीईटी लगाना पड़ेगा, सिक्योर लैंडफिल साइट लगाना पड़ेगा, और हमें कॉमन इंसिनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। कन्वेयंस सिस्टम, हम नदी को भी पुअर नहीं कर सकते। हमें बम्बई का जो कल्याण का और जो केस है, इसी तरह हमारे साबरमती का भी चल रहा है।
हर जगह। लेकिन मैं भरूच डिस्ट्रिक्ट की बात बताऊं तो हमने 2000 पे डिसाइड किया, 1998 से ऐसे चलता था, क्योंकि अहमदाबाद का देखते हुए हम डर गए थे और हमने थॉट प्रोसेस चालू किया 2000 से। हमने कन्वेयंस सिस्टम CTP और कन्वेयंस सिस्टम इनटू डीप सी 55 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन लेके हमारा ट्रीटेड एफ्लुएंट हम डीप सी यानी 10 किलोमीटर अंदर डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करने के लिए हमें सेपरेट पैरामीटर भी गवर्नमेंट ने दिया, रिलैक्स पैरामीटर डीप सी में डिस्चार्ज। और हमारी नर्मदा नदी आज हमारा कोई ट्रेड एफ्लुएंट एक बूंद भी नहीं जाता है, नदी को क्लीन किया। ऐसा ही करने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर को भी बोला था कि क्या हम गुजरात की हर रिवर को कहीं भी जगह ऐसे भर के पानी पी सकते हैं? ये कर सकते हैं, हो सकता है। यदि कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाए, कुछ नहीं करे, 5 साल के लिए हम एक बार डिसाइड कर दे कि हर रिवर को हमें क्लीन करना है और हर करना है, तो ये हो सकता है। और इंडस्ट्री मेजर रोल भी प्ले कर सकती है और उसका रिवार्ड बोर्ड की ओर से मिलने वाला भी है। तो उस दिशा में अभी हम ज्यादातर बात कर रहे हैं सरकार के साथ भी, और साथ में अभी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो एक हम बात करते हैं कि ऐसे ही तीसरा एक इम्पोर्टेंट इश्यू हमने जैसे माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ दिया था कि गुजरात में हम एक्सपोर्ट और भी बढ़ा सकते हैं एक सेक्टर के अंदर। हमारे नटू भाई जी जो बनाते हैं प्रोडक्ट, उसी में कॉपर थैलोसाइनाइन बेस्ड इंडस्ट्री का आज गुजरात का हिस्सा है पूरे कंट्री में, उसमें गुजरात का हिस्सा 80% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरा गुजरात में बनता है, उसकी कॉपर थैलोसाइनाइन और उसके डेरिवेटिव्स। और मेजोरिटी एक्सपोर्ट पूरा जो होता है उसमें भी ये गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको आगे बढ़ा के हमें गुजरात को वर्ल्ड लीडर बनाना है इसी सेक्टर के अंदर। तो 2 प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की कि हमें अभी सबसे बड़ी जो हर्डल्स है उनके डेवलपमेंट में, वो स्पेंट सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होता है, उन स्पेंट सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे हम रीजनरेट करके 98% बना के रीयूज किया, उसके पर काम करना है। और दूसरा काम है उसी इंडस्ट्री में उसके डेरिवेटिव बनाते हुए, और बहुत सी इंडस्ट्री गुजरात में है और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत भर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है और उसको डिस्पोजल का प्रॉब्लम है, और उसी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये सेक्टर का हम डेवलपमेंट नहीं करते कि एनवायरमेंटल लॉ को ऑब्जर्व करने के लिए 2 बड़े हर्डल्स है। तो उन 2 चीज के लिए हमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है उनके साथ विदेश में अब्रॉड में है, यहाँ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अभी बात कर रहे हैं। और ऑनरेबल मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को ये बात बताई कि हमें ये 2 प्रोजेक्ट करना है, और 2 प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का हमें सपोर्ट चाहिए। और चीफ मिनिस्टर भी हमारे ऐसे ही उत्सुक है, ऐसे ही उसने आदेश दे दिया। आज हमारी शाम को मीटिंग है, इंडस्ट्री कमिश्नर, केमेक्सिल और हमारे इंडस्ट्री, ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ाए और गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट लेके हम जब चलेंगे तभी मेरे ख्याल से हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें बढ़ाना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात के साथ मुझे जो एलोकेट टाइम दिया 5 मिनट दिया गया था उसमें मेरी बात संपन्न कर रहा हूं। पर आज के दिन में लॉट ऑफ वर्क हमने अंकलेश्वर और सराउंडिंग में किया है, और मैं इंडस्ट्री के जितने भी यहाँ आए हैं उन सबको एक बात करता हूँ कि हम इंडस्ट्री लगाए लेकिन सेल्फिश नहीं बन सकते। हमें पूरे भारत देश के लिए सोचना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन के लिए सोचना पड़ेगा, हमारी जितनी भी जनता है, हमारी जमीनें, हर चीज के लिए सोचना पड़ेगा। हम कोई भी प्रकार की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं हुए ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा, और हमें साथ में ही चलना पड़ेगा। और जब ये डिसीजन लेते हैं कि हम ये सब करेंगे तभी डेफिनेटली हमें ही बेनिफिट होगा। हमें आज मैं सही में बात करता हूँ,
अंकलेश्वर की सिंपल बात बता दूं, जीआईडीसी का वहां लैंड का रेट 3,000 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर हमारे यहाँ सरकारी रेट। लेकिन आज आपको लैंड परचेज करती है तो महेश भाई कितना रेट है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। हर केमिकल सेक्टर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर चुके हैं और इंडस्ट्री के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी वजह से ना तो आज तक हाई कोर्ट, ना तो एनजीटी, ना सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी हमें पेनल्टी की और हम उसी दिशा में सोचते हैं। आगे आने वाले हमारे बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री के लिए। हमें यदि लीडर बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, ट्राई ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो हमारी इंडस्ट्री ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। और उसमें हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें कॉम्पिटिटिव भी बनना पड़ेगा। हम अभी के बॉयलर पर भी काम कर रहे हैं, कैसे एनर्जी को क्लीन एनर्जी यूज करके। लोग बहुत से सोचते हैं और आज भी चल रहा है कि सीएनजी इज द बेस्ट क्लीन फ्यूल, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन I don't agree with that thing. CNG is not a clean fuel thing because it's emit lot of PM2.5. फाइन कंबस्टन होने से CNG से PM2.5 की हर स्टेट में हम क्लस्टर में मेजर कर रहे हैं PM2.5, और जो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है वो बढ़ रहा है। तो उनके पर भी हमें सोचना पड़ेगा PM2.5 कैसे कम करें। तो हर चीज पर अभी हम वर्क कर रहे हैं। हमारे साथी मित्र सब इधर आए हैं और डेफिनेटली हम सालू के जी से बात करेंगे कि भारत सरकार के साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट लेके हमें जो कॉमन प्रोजेक्ट करना है उन प्रोजेक्ट को भारत सरकार कैसे हेल्प करे, गाइडेंस। सपोज अभी हम आज बात करने वाले हैं कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए बहुत दुनिया में है, लेकिन एक ट्रस्टफुल, बहुत से लोग आते हैं टेक्नोलॉजी बात करते हैं लेकिन ये मोबाइल जैसा है, आज वो अच्छी बताते हैं कल पुरानी हो जाती है और नहीं आ जाती। तो हमें इंडिया में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी कैसे हर चीज पर डेवलप की जाए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ बात कर रहे हैं और आज फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा ऐसे उम्मीद है। फिर से एक बार केटी पटेल और सालू के जी आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आपने मीट रखी और हमें बोलने का मौका दिया, हमारे विचार प्रस्तुत करने का। धन्यवाद, आभार। Thank you so much, sir. So before we move ahead, I would like to thank all the sponsors. Now I would like to request Mr. Chandrakant Salunke sir to present bouquet to all the sponsors. Vivek Singhal, Bank of Baroda. Rajendra Man Pandey, GM Bank of India. Mr. Harsh Kumar Mehta, AGM Punjab National Bank. Mr. Hafrid Nasaranji, Chief Commercial Officer, Gati KWE Limited. Mr. Pramit Joshi, Senior Director, Credix. And lastly, Mr. Shrikant Barve Group of Pune. He has achieved 5,000 crore turnover and he has factory in Ahmedabad with 2,000 crore turnover. He has specially come for this program from Pune. Now I would like to invite our next speaker, Mr. Nilesh Chejparia, Director, Kera Vitrified LLP. And a humble request to all the speakers, can we keep the speech bit short and sweet? Thank you so much. Can we have huge round of applause for him? नमस्कार,
आज के गुजरात इंडस्ट्री एंड एसएमई समिट में आए हुए सभी पर विराजमान सभी महानुभाव और सब कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और जब हमारा स्टार्ट हुआ बात का कि 180, मैं आज एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा बात करूंगा, 180 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट है। यही फर्क है, हमारा मतलब मोरबी। हम मोरबी को हमारी कंपनी मानते हैं, मतलब हमारे क्लस्टर को हमारी कंपनी मानते हैं। तो ये सोच हमने 10 साल पहले जब स्टार्ट किया है, 55-60 कंट्री का एक्सपोर्ट आज यहाँ तक पहुंचा। एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए? सीधा मैं बहुत छोटे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और बहुत कम समय है। एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा मार्केट सिर्फ 130 करोड़ लोग नहीं है, हमको 8 बिलियन लोगों को टारगेट करना है, सीधा है। एसएमई सबके लोगों के अंदर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या छोटा इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट करने में उसको मुश्किलियां होती है, उसको मार्केट करने का ये होता है, वो प्रमोशन नहीं कर पाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने मोरबी से 2 क्लस्टर के अंदर एक एग्जांपल सेट किया। जो लोग खर्चा कर सकते थे, बड़ी कंपनियां थी, उसके साथ छोटे लोग जुड़ गए, उसकी ब्रांड में या कोई अलग ब्रांड करके उसको माल देके उसको जो क्वालिटी चाहिए वो छोटे लोग बना के साथ में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और जो छोटे लोग थे वो सीखते गए कैसे क्वालिटी होती है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, वो फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसने छोटे का पकड़ा। सिरामिक इंडस्ट्रीज में हमने ये सेट किया। उसके बाद हमने एग्जांपल, एक मीटिंग था, हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग भी मोरबी में है, तो ग्लोब इंडस्ट्रीज का जो एसोसिएशन का मीटिंग था उसके अंदर हम गए थे एज अ गेस्ट। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि काफी यहाँ पे घड़ी के छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, क्यों यहाँ पे मोरबी में ही सबसे बड़ा लीडर बैठा है, क्यों ना इसका जो छोटी कंपनी को माल वो अपनी ब्रांड में लेके एक्सपोर्ट करे। उस टाइम मेरे को याद है जयश्री भाई ओरेवा के डायरेक्टर अवेलेबल थे, उसने उस चैलेंज को स्वीकारा, उसने अपनी प्रोडक्ट का मोल्ड, डिजाइन, पैटर्न सब लोगों को दिया और आज वर्ल्ड के अंदर ओरेवा काफी अच्छा एक्सपोर्ट छोटे छोटे लोगों के साथ लेके कर रहा है, बहुत कम समय में। उसके बाद बात करें एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहला रूल है क्वालिटी। सबसे अच्छा क्वालिटी बनाओ, कॉस्ट कम करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो, और सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा छोटी इंडस्ट्रीज का एक मेंटालिटी होता है कि हर महीने पैसा आ जाना चाहिए, घर पे आ जाना चाहिए। मुनाफा नहीं आया तो पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं। मुनाफा आएगा, थोड़ा लंबा सोचो, 5 साल 10 साल का, अच्छी क्वालिटी बनाओ, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करो, वर्ल्ड का ब्रांड बनाओ। वर्ल्ड की बड़ी कंपनी आपके साथ जॉइंट वेंचर में आएगी, आपकी 20 करोड़ की कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ 5 साल में हो जाए। और ऐसे एग्जाम्पल मोरबी में हुए ये लास्ट 5 साल के अंदर। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट क्या है, छोटे लोगों के लिए क्या है। और सबसे आज के दिन में बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने, भारत सरकार का कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी हो उसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड है। पहली बार 29 मेंबर इंडस्ट्री, एसएमई और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से ये पहली बार ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर। अभी लास्ट 2 दिन पहले मीटिंग में जाके आए, क्या केस है आपका, क्या इश्यू है, सीधी बात करो, सीधा उसका सोल्यूशन। तो सरकार के पास स्कीम है, हमारे पास नहीं आती। हम ये मानते हैं कि हमारे पास कोई स्कीम नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, मीडियम स्केल के लिए काफी स्कीम है, लेकिन हम उपयोग नहीं करते, और उसका सबसे ज्यादा उपयोग मोरबी ने किया। और कोविड के बाद अगर हम बात करें, एक भी महीना हमने ऑनलाइन B2B के बिना नहीं निकाला। पूरी दुनिया के साथ जितने भी एम्बेसडर थे, उस एम्बेसी मोरबी सिरामिक एसोसिएशन क्लस्टर के साथ मिलके हमने हर महीने B2B किया,
वो B2B 3 दिन 4 दिन 5 दिन चला। 25 इंपोर्टर वो कंट्री से एम्बेसी में आएगी या तो ऑनलाइन ऑफिस में रहेगी, यहाँ से 25 लोग ऑनलाइन ज्वाइन होंगे। हर एक 20 लोग या 10 लोग हर एक 20 यहाँ से इंडस्ट्रीज के साथ ऑनलाइन B2B करके हमने एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग किया, प्रमोशन किया और सक्सेसफुल। मैं बताऊं 5 दिन पहले ऐसी ब्राजील की एक मीटिंग थी, एक कंपनी को 4 कस्टमर कंफर्म, एक ही कंपनी। आप सोचो हम उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमने किया एज ए एसोसिएशन, एज ए ट्रेड लीडर। हमने हर एक एम्बेसी को डायरेक्ट कनेक्ट किया। हमने बोला कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मैं मानता हूँ गुजरात की हर एक इंडस्ट्री जैसी ही है। अगर हम अपने जात को छोटा ना समझे, हमारे पास सबसे सस्ता वर्कफोर्स है, सबसे क्वालिटी पीपल हमारे पास है और सबसे बड़ी ट्रस्टेबल ब्रांड इंडिया है। क्योंकि मैं कोई कंट्री की बात नहीं करूंगा, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेकिन सबसे ज्यादा चीटिंग लोगों को उससे ही हुआ है। तो लोगों को सेकंड ऑप्शन चाहिए और बेस्ट ऑप्शन है हमें। तो इंडस्ट्रीज को उसके लिए आगे जाना पड़ेगा और काफी है, लेकिन मेरा टाइम हुआ है। तो फिर आती है बात की एग्रीमेंट। आज एक सरकार दूसरी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करती है, जैसे सेपा एग्रीमेंट हुआ, ऐसे हमारी भारत सरकार की काफी कंट्री से एग्रीमेंट है। लेकिन हम एज ए इंडस्ट्रीज और एज ए लीडर में बोल सकता हूँ कि हम उसका यूज नहीं करते हैं। अगर वो एग्रीमेंट का जो भी फॉलो या रूल्स है वो सिर्फ सिंगल फॉर्म भरते हैं, उसका क्या फायदा होता है मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी दुबई सरकार के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया, सेपा एग्रीमेंट। हमारी दुबई के ऊपर सिरामिक इंडस्ट्रीज का 18 ड्यूटी था 42% और बेसिक ड्यूटी था 5%। 47% पे हमारा एक्सपोर्ट होता था। एग्रीमेंट जैसे हुआ 1 महीने के अंदर हमने उस सिस्टम को समझ के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, इंडियन एम्बेसडर दुबई के साथ और उसके मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, उसके कस्टम डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके आज हम 4.5% के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी कंट्री आपका फोकस है उसका एग्रीमेंट का स्टडी करो और आप लग जाओ। कोई सरकार या कोई ऑफिसर आप आके आपको समझाएगा ऐसा होगा नहीं, हमको ही करना पड़ेगा और हम करेंगे तो सब पीछे आएंगे, वो की बात है। तो ये तरीके से काफी एग्रीमेंट का भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके आगे बात करें तो रिवर्स बायर सेलर भी हम हर एक छोटे इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने प्रमोशन काउंसिल बनाया है। हम हर एक उसका मेंबर है ही, होंगे ही, क्योंकि उसके बाद ही हमारा आईसी कोड आता है। तो उस प्रमोशन काउंसिल को कनेक्ट करो, वो आपके लिए रिवर्स बायर सेलर मीट करेगा हर एक कंट्री से। हर साल उसके पास बजट रहता है कि 20-25 पूरी दुनिया से बायर लेके आएंगे, आपके क्लस्टर में लेके आएंगे सरकारी खर्चे और आपके साथ वो बिजनेस करेगा। सेम मैंने बोला ऑनलाइन B2B, वो तो आप हर महीने कर सकते हो। रही बात तो हमको ट्रैवलिंग में जाने दी, तो हर एक एम्बेसी अगर आप 20 लोगों का डेलीगेशन लेके कोई भी कंट्री में जाते हो, तो आज तक हमने करीबन 50 कंट्री में इंडियन एम्बेसी के एम्बेसी हाउस के अंदर या उसकी ऑफिस के अंदर हमारे इंपोर्टर को वहां बुलाया है, हम लोग वहां गए हैं, सरकार के पैसे पे खाना खाया है, मीटिंग किया है। उसने हमारी प्रमोशन पहले महीना दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले प्रमोशन किया है और काफी अच्छा उसका फायदा हमने लिया है। स्कीम सब है। अगर कुछ भी इसके पीछे कुछ भी अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। कभी भी मेरा कॉन्टेक्ट करके मैं आपको हर एक स्कीम का ये बताऊंगा। लास्ट में सबसे बड़ा डर होता है कि एक्सपोर्ट किया क्रेडिट में लोग मांगते क्या होगा। 75% ECGC करवा दो, 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए तैयार है, रेडी है। छोटा छोटा ट्रायल करके एक दो कंटेनर करके स्टार्ट करो 25% का रिस्क लेके, क्योंकि 25% तो हम ऐसे भी प्रॉफिट रखते हैं, तो जाएगा तो क्या जाएगा, सब प्रॉफिट जाएगा। तो ऐसा करके एक, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन चाइना है वो बिना पेमेंट करता नहीं है और हमारे पास सरकार है तो 75% देने के लिए तैयार है। तो हर एक पॉलिसी का लाभ लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हम भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू, आभार।
Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Lakhabhai Keshavwala, CMD Satyakam Group of Companies, for addressing all of us. गुजरात इंडस्ट्री एसएमई समिट में सॉरी मैं गुजरात में बोल गया डैश पर उपस्थित सर्वे महानुभाव और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं आपको जामनगर के बारे में थोड़ा बताऊंगा क्योंकि जामनगर एशिया का सबसे बड़ा ब्रासपाट का हब है, लेकिन इतना हाईलाइट आज तक नहीं हुआ। अलीगढ़, जगाधरी, मुरादाबाद वो सबको दिखते हैं, लेकिन जामनगर जिसको बोलते हैं गुजरात का छेवाड़ा का गांव है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन जामनगर में 1947 में ब्रासपाट का जन्म हुआ, क्योंकि उससे पहले प्लास्टिक उद्योग था बटन का, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक मशीन आने की वजह से खत्म हो गया। जुगाड़ की मशीनरी से हमारा ब्रासपाट उद्योग चालू हुआ और आज 74 साल के बाद विश्व के हर देश में, जैसे जर्मनी हब है इंजीनियरिंग का, वहां भी हमारे पार्ट्स ब्रास के जाते हैं। पहले आज से 10 साल पहले हम अरब कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, छोटी छोटी कंट्रियों में, अफ्रीकन कंट्रियों में हमारा एक्सपोर्ट होता था। जब से इंडिया में सीएमसी और वीएमसी मशीन बनने लगे, तब से पूरे यूरोप कंट्री में हमारा माल ब्रास का जाता है। पर मंथ 800 टन इंपोर्ट होता है और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट का करीब 200 टन माल आता है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की एक मर्यादा होती है। कोई देश को उन्नति के लिए हमें कुछ करना है तो एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और एक्सपोर्ट के लिए जो अभी सीएमसी और वीएमसी के लिए राजकोट में इंडो जर्मन टूल रूम है, ऐसा ही हमने नियारा के साथ एमओयू किया है जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ने ट्रेनिंग सेंटर के लिए कि वीएमसी और सीएमसी के ट्रेनर हम एसोसिएशन वहां पे अवेलेबल करें, क्योंकि उसका खर्चा इंडो जर्मन जो जाता है वहां से जामनगर के तो करीब 50,000 का खर्चा आता है, और जामनगर में हम उसको 6,000 रुपया में ट्रेनिंग 1 महीने में, जो 3 महीने की वो 1 महीने में नियारा के साथ रह के हम कराएंगे। अभी उसकी मशीनरी आ गई है और ट्रेनर भी हमें नियारा वाले ही देंगे, तो वो सरकार के साथ मिलके कर रहे हैं। ऐसे ही हमने ब्रास का एक मेटालेब आज से 12 साल पहले चालू किया था। वो मेटालेब को हमने एनएबीएल किया, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। अब हम हमारा एसोसिएशन ही हमारे जो सभ्य है जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम दे रहे हैं। तो अभी जैसे कि नल पहले दिल्ली में ही बनते थे, अभी जामनगर में 800 फैक्ट्रियां नल की है। जो जेगुआर का जो वर्क करते हैं, जेगुआर का जो 5,000 का नल आता है वो इधर बनता है खाली 2200 रुपये में। आप सोचो कितना मुनाफा वो खाते हैं। हम ये बोलते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करना ही चाहिए। तो जो आज सरकार के अभी बोल रहे थे नावड़िया जी की जमीन का रेट, तो वहां भी हमारे 3500 रुपया पर फुट जीआईडीसी का हो गया है। तो अगर 1 लाख फुट जगह चाहिए तो 35 करोड़ चाहिए। तो उद्योग को बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार को हमने लिख के दिया है कि भाई इतनी फाजल जमीन पड़ी है, आप उसको जीआईडीसी को आप दे सकते हैं, या थर्ड पार्टी किसानों से लेके जीआईडीसी को दे सकते हैं। चलो रूल्स है केंद्र का कि किसान से हम खेती की जमीन बर्जबरी पूर्वक नहीं ले सकते, लेकिन थर्ड पार्टी तो ले सकते हैं। ऐसा ही हमारा जीएसटी का प्रॉब्लम है, हमारी कॉस्टली आइटम है। अभी 550 रुपीज पर केजी का ब्रास का रेट था, अभी सीधा डाउन होके 470 हो गया। तो ये जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है, और डॉलर अप डाउन होता है। 80% हमारा माल इंपोर्ट होता है, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। हम सरकार से भी रजूआत करते हैं,
निर्मला सीतारमण जी के पास भी हम 2 बार हमारा एसोसिएशन मीटिंग करके आया है कि कुछ जो बुकिंग कराते हैं तभी जो रेट है डॉलर का वो सरकार अवेलेबल कराए तो उससे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिलेगा और 3 लाख लोगों को रोजी रोटी देता हुआ हीरा उद्योग और कपड़ा उद्योग के बाद कोई सबसे बड़ा हमारे सौराष्ट्र का कोई उद्योग है वो ब्रास उद्योग है और उसमें बहुत से स्कोप है देश की उन्नति के लिए। एक्सपोर्ट जैसे अभी सभी ने बोला कि एक्सपोर्ट जरूरी है तो वीएमसी और सीएमसी मशीन आने के बाद जो ग्रोथ यूरोप कंट्री में 10% 1% से 9% बढ़ गया क्योंकि जो पैसा यूरोप कंट्री से जो इंडिया में आएगा क्योंकि दुबई में यहाँ से जो 560 का बेचते हैं दुबई वाले 600 में बेचते हैं वही माल अगर यूरोप में जाएगा तो 1500-1600 रुपया पर केजी जाएगा तो उससे देश में उड़ियामन भी बढ़ेगा और उन्नति भी होगी और जो कैरेट के लिए सबसे बड़ा माध्यम हमारी इंडस्ट्रीज है। अगर सरकार इसमें और सहाय करे तो हम ज्यादा से ज्यादा एक लोगों को जॉब भी दे सकते हैं और देश की उन्नति में जब भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है तो हमारा कुछ हिस्सा होना चाहिए हम सबका ये कहना है और टाइम खत्म हो गया है ज्यादा बोल नहीं गया और केसी साहब और समिति साहब ने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Shrikant Barre Group Pune for addressing all of us. Can we have a huge round of applause for him? Good morning. Myself, Shrikant Barre from Barre Limited. We make antibody components. I remember when I came in the morning, I came from Pune and I was sitting in the audience with you. I remember my young days. I did my B in 87 and attended one seminar like this. And I was a budding MSME, that time it was SME, that was MSME. And I was a budding MSME person starting my factory with 3 workers. And I have 150 square foot rented premises. And my first year turnover was just 1 lakh per annum, rupees 8,000 per month. Very humble beginning. And it was in Pune. And I wanted to grow further. And I was looking for a bigger piece of land, which was costing 5 lakh rupees, which was not an easy thing for a person to get in 87. So I just went to Aurangabad and found that the land was cheaper. The land which was in Pune at 5 lakhs, I got it to 20,000 rupees only. I shifted from Pune to Aurangabad, stayed in the hostel in the dormitory, and started the factory. The point what I'm trying to tell to you is you need to take some decisions which are different than normal thing. My friends told me, you are in Pune, stable life, happy life, good social place to go, have good hotels, theaters. And Aurangabad was the very beginning of the career. It was the beginning of the small place. So it was not as famous as Pune. I said, no, when I want to do a business, you should take some challenges, you should take some risks. And we started the factory. It was not an easy thing. It was a very tough challenges. I had jaundice, I had typhoid, I had piles operation. Why? Because we were struggling against the time, struggling against the finance, and there was a one-man show. So my doctor, I asked him, what is going wrong with me? He said, you are fighting on 2 fronts, physical front and mental front. You cannot fight on 2 fronts. I said, no, I want to make my life better and growing. So that time when I used to think, I thought if I do a turnover of 1 crore, I'm more than happy. So the aim that we set, target we set are different. As we grow, initial years were very tough, but then I was decided, and then we went ahead, and then we could turn around 1 crore, then 2 crore, 4 crore, 8 crore. So things went on, and I started increasing the target that I want to achieve. Today, we are doing around 5,000 crores, and we have 30 plants across the country. We have Uttarakhand, Rajasthan, we have factory in Gujarat, in Ahmedabad and Vadodara. So we are very happy and proud feeling that we are making automotive components for all the brands in the country and export also. We export to Japan, Land Rover, Piaggio, Honeywell, Volvo, many countries we export. So my point is that when you decide that you want to make it happen, you can make a career. It is up to us how to fight for our challenges and overcome them. Nobody is going to come and handhold you beyond the level.
we need to do our own hard work, dedication, and devotion. So my point is that MSME is the backbone of the country. When we started, it was a small business, and today we have grown 10,000 people are employed with us. We have 3,000 engineers. So when you decide in this journey, we got award from Government of India, Ministry of Industry. We got award for quality, we got award for entrepreneurship, and award for R&D. These awards are given like a Padma Shri award for an MSME company. And we are the only company in the country who received all the 3 awards. My point is that when it can happen with me, it can happen with you also. What you need a high devotion, high dedication, and your life is in your hand. So my point is that we have to take challenges. When we started in 87, there were no mobiles. Internet was just beginning. It was just a different life. Today, we have mobile in our hand. We can connect to any person in one moment. We can communicate with him. The things are very different. Crowdfunding. Please understand the startups, the unicorns. The India has highest unicorns in the world. More than 100 unicorns. I remember when somebody comes with a good idea, and it appeals to the masses, it makes your life easy, it makes your life simple, you get an acceptance, and your company valuation goes differently. Being a unicorn is a proud feeling for the country, is a proud feeling that yes, we are doing different things. So I always feel that people of India have high intelligence, high different thought of application of mind. What we need is more entrepreneurship, no risk-taking approach. Crowdfunding is the call of today. It is happening. So I always feel we should apply these facilities, the benefits in our real life to make our life better for our generation, next generation, for our country. I went to US last few months before, and I met one of my friends. He told that he wanted to go to a morning, we were planning for a meeting for the next morning. He said, no, in the morning I go for yoga. I say, oh, good. Who is teaching you yoga? He says the US person is coming and teaching him yoga. I was so happy. Our country's respect has gone so high that people want to practice yoga. And a person from US origin has learned yoga, and it has become a life of earning for him. He is using yoga to make his life as an earning for himself. So this is the respect for the country. Our Prime Minister Narendra Modi ji has given such a fantastic thing for us. The respect for the country has gone up. When I used to go 25 years before, we would look differently. When I go, it is looked with a lot of respect and honor. So this is the plus point for us. What we need. So how to make our country a $5 trillion economy is in our hand. So we should do good startups. We should do good different things. And it is up to us how to capture the world of the market. Today, the whole world is looking at us, how India can benefit and grow in their economy. Because India is a low-cost country. Our labor cost is better. Our effectiveness is there. Our productivity is good. So we should take benefit of this. We should grow this country to the next level and make our India proud. Atmanirbhar Bharat is our motto. We should make it happen. Make in India is what is possible. MSME who is sitting here can do this. So I always feel Chandrakant Salunke is a very dear friend of me. And the efforts and the dedication he has for MSME. How I met him? I met him in such seminar in Mumbai. That is how in the last 92, so long many years. So this is the way he has supporting our MSME people. And I think the people in Gujarat, I could see an ample number of years. So I really wish you all the best. Please think for your career. Your career is in your hand, and we must make it proud for our everybody, of our nation. So I really thank you, Chandrakant, for calling me and giving this opportunity and share my personal experience with you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. So now we'll be launching the Ahmedabad Business Forum initiated by SME Chamber of India and Federation of Indian SME Associations at the hands of Chief Guest and Guest of Honor. I'll give you a brief of Ahmedabad Business Forum. Ahmedabad Business Forum will provide a platform to the business community from various sectors to meet every fortnightly to exchange business requirements, business information, business leads, referrals, and identify business partners, suppliers, buyers, and investors, as well as service providers. Ahmedabad Business Forum meetings are not restricted to only local business, but this will provide opportunity for every entrepreneur and senior executive of the company
to participate and explore emerging business opportunities. I request all the participants present here to enroll for this business forum and also encourage friends and colleagues to enroll. The business forum meetings will start from 1st October 2022 onwards. Thank you so much. Thank you very much. मैंने आज का ये प्रोग्राम का प्रिविलेज ऐसे लिया, कितने अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है फ्रॉम वेरियस सेक्टर, और सभी गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे गुजरात को। सो अहमदाबाद बिजनेस फोरम इज अ यूनिक कंसेप्ट। आप जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाते हैं, यहाँ पर आपको यू विल पार्टिसिपेट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया। Anybody can participate in this business forum. This will be a very unique platform where you can have a interaction, B2B, identify supplier, identify manufacturer, identify service provider, and most important, we don't charge commission. We don't charge commission. We don't take commission. हाँ, अच्छे genuine businessmen आएंगे, genuine business कीजिए, but आपके risk पे लीजिए. So friends, I'm thankful to all the sponsors. I will not take much time, but special thanks to HP, Gati, Intel, for PNB, and all the sponsors which have supported me to regularly. Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, LIC, GoTo.com, Credix, SBI General Insurance, Research India, Drip Capital, Kotak Bank, Aditya Birla. Special thanks to the government of Gujarat. And the Honorable Minister informed me that he will be trying to reach by afternoon. And I want to give them more information about SME Chamber of India is working for last 29 years. 10 years हम लोग गुजरात में एक्टिवली काम कर रहे हैं, और गुजरात में मैं 1997 से प्रोग्राम कर रहा हूँ. And I observed that many entrepreneurs looking more opportunities. जैसे आपने सभी ने कहा कि क्वालिटी है, क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, बिजनेस है, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सपोर्ट चाहिए, इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, गवर्नमेंट इज देयर, आपके सभी है, प्लेटफॉर्म चाहिए. एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कमर्शियलाइज. दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू कमर्शियलाइज. और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली एंटरप्रेन्योर. सो वी आर अनाउंस दैट प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड्स. नेक्स्ट मंथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेके हम अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं. ये अभी पितृपक्ष चल रहा है. उन्होंने भी कहा कि आप दशहरा शुरू होने के पहले या बाद में कीजिए. वी आर गोइंग टू. सो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अनसंग हीरोज है, जो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अच्छा काम किया है, इनोवेशन किया है, इनोवेटिव आइडियाज है, along with that टर्नओवर भी बढ़ा है, along with एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, along with that they have supported other entrepreneurs to grow more. आज देखिए कितने स्टॉलवर्ड बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कम से कम, मुझे नहीं लगता तेरी 5000 कंपनियां को सपोर्ट करते होंगे, मिनिमम 5000 तो इनके पे डिपेंड है. आज मोरबी का किस्सा सुना, जैसे आप बोर्ड ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं. आज पीयूष गोयल इज टेकन इनिशिएटिव, नारायण राणे टेकिंग केयर ऑफ एमएसएमई, फाइनेंस मिनिस्टर इज डूइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट. आज महेंद्र भाई ने भी कहा, नवाड़िया जी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 2007 में मॉन्टेक्स वाले मेरे एक प्रोग्राम में आए थे. सेम वे आई सेड वी डू नॉट हैव स्किल मैन पावर. तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा कुछ ऐसा मैकेनिज्म कीजिए कि, तो देखिए एनएसडीसी मेरे बदौलत है. 2008 के प्रोग्राम में मैंने सेबी चेयरमैन को बुलाया था. मैंने कहा एसएमई को कैपिटल मार्केट दीजिए. इमीडिएटली ही टुक अ डिसीजन, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज लाया. सीडीबी के प्रोग्राम में मैं जाता था 97 में. आई वाज वन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स. मैंने कहा हमारे एसएमई को कोलैटरल फ्री लोन मिलना चाहिए. तो उस वक्त 25 लाख, फिर 50 हो गया, फिर 1 करोड़ गया. प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ा तो उन्होंने 2016 के दिसंबर में 31 दिसंबर को 2 करोड़ किया. अभी मैं पीछे पड़ा 5 करोड़ ऐसे स्मॉल स्केल के लिए, 15 करोड़ से 35 करोड़ मीडियम साइज के लिए मिलना चाहिए. ये और एक्सपोर्ट्स आज 1,42,000 रियल एक्सपोर्टर्स इंडिया में, 7.5 करोड़ एमएसएमईज और सेल्फ एम्प्लॉयड. आज कितने एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, कितने एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं, ये बात जानना जरूरी है. सो फ्रेंड्स, लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी. यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, जीसीसी है, वी हैव इंडिया जीसीसी एशिया बिजनेस काउंसिल. आज सऊदी में इतना अच्छा बिजनेस बन रहा है, इसका फायदा लेने की जरूरत है.
गुजरात और इंडिया, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, आज आगे बढ़ रहे हैं। हम इंडियंस हैं, हमको अपने फायदा लेना है। जैसे आपने भी कहा कि वर्ल्ड मार्केट में हमें जाना है, कॉन्फिडेंस है, कनेक्टिविटी है, प्लेटफॉर्म है, इसका फायदा लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया दे आर ऑलवेज विद यू। आप इसका फायदा लीजिए। कैसे फायदा लेना है वो मेंबर बनने के बाद आपको जरूर मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए आप मेंबर बनिए, कनेक्ट होइए। और दूसरे एंटरप्रेन्योर, दोज आर इन मैन्युफैक्चरिंग, if they looking for a hand-holding, जैसे मैंने कहा 7200, HP will be my partner for a technology base, और इसका फायदा लेंगे। इवन नसरुन जी, you are not there in the morning. गति शक्ति, today the honorable prime minister is launching. In that Gati Shakti, you can bring affordable and advanced logistics services. So Gujarat is the hub. You are doing good business, and we wish you should expand your business. Thank you very much. So now we are going to merge the next session. आज इतने अच्छे स्टॉल वाले, किसी को हमको रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो भाषण है, उनका जो इंटीग्रेशन है आज का, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। मैं रवि भारती जी को बुला रहा हूं। So today we are doing a lot of activities. Rather, in the next session you will be finding so many different type of speakers. जो speakers है, जो आपको अच्छी तरह एक knowledge दे रहे हैं। सभी बैंक, आज कौन सी बैंक के पास अगर आप प्रपोजल ले जा सकते हो और प्रपोजल उनको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रपोजल सही होना चाहिए। Every bank is hungry for a business. आज हम RBI के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी का मैं मेंबर हूँ। हर मीटिंग में हम कोशिश करते हैं कि हाउ क्रेडिट फ्लो कैन बी एनहांस फॉर एसएमई सेक्टर। आज सिर्फ 95 लाख एमएसएमईज आर एंजॉयिंग बैंकिंग फाइनेंस, बाकी कहाँ जाते हैं? तो बैंकर्स को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। केसी चक्रवर्ती जब बैंक ऑफ बड़ौदा के पीएनबी के चेयरमैन बने, जब बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, दैट टाइम ही सेड हर मैनेजर ने सोचना चाहिए कि मेरे सामने बैठा हुआ एंटरप्रेन्योर आज का एक छोटा है, लेकिन कल का धीरूभाई अंबानी बन सकता है। So, हमें वो सोचने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है। एक अगर हम लोग वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो मुझे लगता है इसका फायदा हम लोग बहुत कर सकते हैं। So friends, with this words, I am thankful to you. Ravi Bharti is our director for the Gujarat for SME Chamber of India. I request Mahendra bhai to felicitate him. थोड़ा उनको जोश आना चाहिए और ज़्यादा काम करने। He is IIM Ahmedabad candidate और बहुत अच्छी तरह बिजनेस करते हैं, and he is supporting transformation of the business. He is advising companies for a financial management, business growth. तो आज हमारा full fledged office अहमदाबाद में इसका फायदा लीजिए। So thank you very much. I request all the participants to be here. Now we are not taking break. Enjoy the next speaker's thought process for your benefit. Thank you very much. Thank you so much, sir. So now I would like to invite the next lot of speakers on the dais. Mr. Huafreed Nasarwanji, Chief Commercial Officer, Gati KWE Limited. Everyone, please be seated. We are continuing with the session, please. Next, मैं बुलाना चाहूंगी Mr. Ashish Agarwal, Country Manager, Commercial Channel Value and GEM HP. Everyone, please be seated. We are not taking a break. We are continuing with the session. Next, I would like to invite Mr. Harsh Kumar Mehta, AGM, Punjab National Bank, Ahmedabad. Please come on the dais. Mr. Bhavin Thakkar, Global Account Director, GoTo.com. Mr. Pramit Joshi, Senior Director, Credits. Mr. Rajendra Man Pandey, General Manager, NBT Gujarat Bank of India. Mr. Siladitya Chaudhary, Vice President, SBI General Insurance. Mr. Pinaki Samaria, National Acquisition Manager, Kotak Bank Mahindra. Mr. Bhumit Patel, Channel Manager and Regional IC, Aditya Birla Sun Mutual Fund.
Dr. Subhadha M. Rao, founder, Quant Eco Research and former senior group president and chief economist, Yes Bank Limited. I would like to invite all the speakers on the dais, and we can have a 5-minute break for everyone. Okay, so we are continuing with the session. Firstly, I would like to invite Mr. Huafid Nasarwanji, Chief Commercial Officer, Gati KW Limited, for addressing all of us, and his topic is Gati and Shakti for manufacturing and SMEs for empowerment of the supply chain. Over to you, sir. Thank you. Good morning, everyone. I will keep this as short as possible because we covered a lot of ground this morning. I'll just start off with a few very key parameters and not spend too much time on this. But today in India, MSMEs contribute 30% of our GDP and 49% of our exports, employing 111 million people. And we have a total count of 64 million MSMEs in the country today. So when I attend forums like this and when all of you are here, we are basically talking about a very, very significant part of the Indian economy being represented and being developed in these kind of conferences. In terms of where Gujarat stands on the MSME landscape, about 5.2% of total MSMEs state-wise are in Gujarat. So it is an extremely important state for us. And in terms of the four key parameters which make MSMEs competitive is the strategic nationalization and internationalization of markets and demand for MSMEs, the competitive challenges faced through the pandemic and going forward, major supply chain volatilities which exist for us both internationally and domestically, and finally, leveraging digital and visibility for businesses. In terms of how Gati can support MSMEs in the country today, is the first, which is unmatched reach. Unmatched reach, especially for micro and small enterprises, allows them to get to markets, access channels and customers, which were previously not available to them. The second aspect is being future ready. With the reach and the network that Gati brings, especially for micro enterprises, it gives micro enterprises the opportunity to develop new supply chain models, which are not just-in-time fulfillment based, but storage fulfillment based. We have hub centers and warehouses across the country and a reach to 19,800 pin codes across the country as well. And for micro enterprises, this is a huge opportunity to leverage our network. And last but not least is the aspect of technology. Digitization is what enables good business practices, and that is what we are focusing on and helping you deliver to your customers. Very quickly, this is the sort of span that we have across our nation. The whole of India, 735 districts covered by Gati, 19,800 pin codes and 600 offices across the country. This is the kind of network that we can offer micro, small and medium enterprises to enhance your business today. Last but not least, Gati belongs to the All Cargo Group, and the All Cargo Group actually brings a large number of international solutions to MSMEs as well. It is a key focus area for the All Cargo Group, developing business along with MSMEs and enabling you to reach global markets. So I've kept it as short as possible. Thank you all very, very much. Me and my team are here. Please do approach us and we are happy to answer any questions and help you. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Ashish Agarwal, Country Manager, Commercial Channel Value and GMHP. His topic is Digital Revolution, a driving force for SMEs growth. Can we have huge round of applause for him?
Hi, good afternoon everyone. ये बहुत ही मुश्किल सवाल हम लोगों से पूछा गया था और जो सब्जेक्ट दिया गया है वो डिजिटल रिवॉल्यूशन। जब हम गुजरात स्टेट की अगर बात करते हैं तो गुजरात का जो एक नाम आता है, शायद आपको पता होगा कि गुजरात ड्रॉस इज नेम फ्रॉम गुजारा, और जिस स्टेट का नाम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनरी हो कि जिसके बिना गुजारा ही पॉसिबल ना हो, उसके साथ में रिवॉल्यूशन की क्या बात की है ना। सो आप लोगों का जो व्यक्तित्व है उससे हालात ऐसे बने हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, कि अगर हम कहीं भी बिजनेसेस की बात करते हैं गुजरात का एक नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर क्रिएटिंग सच एन एनवायरनमेंट कि जहां पे सब लोगों को बिलीव सिस्टम है कि गुजरात के बिना गुजारा पॉसिबल नहीं। डिजिटल रिवॉल्यूशन की जब भी बात करते हैं गुजरात के साथ में वो बहुत ही ज्यादा रिसेंबल करते हैं, बिकॉज जब भी हम ये गुजरात स्टेट के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं इनोवेशन के बारे में, हम सोचते हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में, और हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं सिंस मॉर्निंग वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट गोइंग लोकल टू ग्लोबल, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, we are talking about the opportunities available for the MSME in India. But what is important, the fact is that there is a critical role of digital, and digital transformation is not an option for any SME customers going forward. While we are moving from a pandemic to endemic, I think the biggest learning what we have right now that ये जो technology को, processes को, automation को और tools को हम लोग option समझ के चल रहे थे आज की डेट में, but we all have realized in the last 2 years that's the only way to go, because while we are talking about pandemic to endemic, fortunately, but we are also living with the fact that the whatever the changes we have seen now in our professional and personal life is going to be remain forever. And why it is important, what I'm going to cover in next 15 minutes 10 minutes, that why it is important for MSME to look at the digital transformation. One, that digital transformation of an MSME is an important from a perspective of coverage. अगर हम इंडिया में और ग्लोबली अगर हमारे मार्केट में ज्यादा कस्टमर के साथ में टारगेट ऑडियंस के साथ में अगर हमें पहुंचना है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The second is improving the efficiency. I think many guest speaker was talking about improving the efficiency. If you have a digital transformation, you solve the biggest problem of improving efficiency. Third, the cost is going to be a very important factor, right? One of the guest speaker was talking about how do you really improve the quality and how do you really take care of the cost. So digital transformation really helps improve the scalability in the business, and that also solves the cost issues. And very importantly for MSME, whenever we have an opportunity to talk to our customers, what we are hearing is that how do you really attract the talent in the new business in a global MNC era, right? So providing the right technology, providing the right tools is very, very important for your employee to stay productivity, and hence they brings a lot of the efficiency in the whole process and the executions, and hence this digital transformation is very, very important. Coming to the next slide, that 2/3 of the SMB customers in India, we are at a stage right now at an inflection point where we are talking about Industry 4.0. So what is the Industry 4.0? Industry 4.0 is just an extension of Industry 3.0. So Industry 3.0 was on a personal computer where most of the MSME have gone through the digitization of their data. And now we are talking about Industry 4.0, which is just an extension of Industry 3.0. If somebody has to really simplify that what is going to be different from 3.0 to 4.0, it is all about the smart manufacturing. And how do you really create a smart manufacturing environment for manufacturing industry? Then the smart manufacturing is all about that you have a different system, different data are talking to each other on the real-time basis, and you understand the data in such a way that you can take an informed decision. We have an opportunity to interact with many of the SMB customers across the country, and whenever we talk to them, we really understand the biggest challenges in the pain area, what they go through. And most of the MSME customers have acknowledged that they have realized during the pandemic time that the digital transformation once upon a time, which was a choice, is no more a choice, is absolutely critical for the business for the 5 problems which I have just spoke about right now. One is improving the efficiency, second is reducing the cost,
Third is the retention and giving a better employee experience. Fourth is the productivity of an employee. And fifth is the coverage. So if you have to really focus on the 5 elements which is core to the business, the digital transformation is absolutely critical for the business. What is also happening right now that while we all understand that digital transformation is important for the business, but the digitization has also intensified the operational challenges and it puts a pressure on the India's IT leader. So let's understand that, for example, the company who is based out of Ahmedabad, the reality is that the 50% of the people are now in many verticals working from home, and some of the people are even working from office. So when you know the fact that the people have to collaborate together, somebody is operating from Baroda, somebody is operating from Surat, Jamnagar, Valsad, Vapi, Rajkot, Jamnagar, anywhere. And it can be from the remotest part of the Maharashtra also. But what is important, if the person is not operating from the office, how do you really ensure the collaborative workforce? So the biggest problem is the distributed workforce. And since you have a distributed workforce, the people are operating in a different environment, hence the connectivity becomes an issue. The another issue, what they really feel is when you are connecting to a public network, how do you really ensure that your, the devices is absolutely secure? We all would have heard that till now, we all are talking about the security from a software perspective. We all are talking about the security from a network perspective. But the device security is going to be extremely critical because most of the people now work on the laptop and they come, they work in the public domain and they work on the public network. When you are operating in a public network, then it is important that your business has to be secure. And for your business has to be secure, your data has to be secure. Cyber security in a post-pandemic situation is the biggest problem which industry is facing today. And third is the more ambitious employee. So the fact is that the industry is not able to attract the talent. And even though if you really attract the talent, the second biggest problem what you really have is how do you really retain them? So give a better technology and the processes so that they really feel contented on the work what they have been given and they do their the job better, which is very, very important. And second is the focus on the environmental science. We need to be really mindful. The people were talking about the ocean-bound plastic. I'm so proud to say that we being a worldwide leader in the global market today, we are absolutely focused on the sustainability, which is the key parameter, while you really focus on the manufacturing. You look at the product what we supply in the market like desktops, you have a 90% power efficient power supply, which really solves the electricity issue, which is supporting the environmental science. And most of the notebook what we sell in the market is made from the ocean-bound plastic, which is another significance, the HP benchmarking, that while you are buying a product which is slightly higher on a price, but the company is absolutely focused on the global sustainability goal. The question is, you really understand the customer problem, you also know the priority, and you also know the aspiration. Then how do we really solve some of the larger issues highlighted by the customer like yours, and how we are solving them? So now we all acknowledge the physical world and the digital world is getting merged. So what we are doing at a worldwide level, the HP Tech Venture company is absolutely focused on some of the large mega trends in the Indian worldwide manufacturing industry. We are just looking at a data trend like artificial intelligence, the IoT, the industry 4.0 revolution, where the data science is going to play a very, very important role. And what we are looking at, how do we really create all the latest technology like in a metaverse, and you create an ecosystem which really helps you to improve your processes and manufacturing capability in the market. And all the disruptive technology like a 3D printing or like a metaverse, HP is leading today to ensure that there is an innovations which supports the industry 4.0 objective. There are 4 pillars which we are absolutely focused on right now, that during the pandemic we all have learned that the workforce is going to be fragmented. How do we ensure there is a better collaborations within the organization? How do we ensure that there is an efficiency in the workforce? How do we ensure that every product you deliver to your customer is done with an innovation in the marketplace? And how do we ensure that every devices you use from HP is secure to ensure that your data is also secure? Sailesh during his the speech also mentioned something about the devices as services.
is not only about using a desktop, notebook, or a workstation from an HP. It is important what kind of a solution we are bringing on the table. So device as a services is actually focused on the solution to the customer. The learning from a pandemic that most of the customers today want to really focus on their business continuity, and hence we want our customer to invest in their own business, while we provide a solution which is a per device solution, and hardware and services is taken care by HP, and you focus on your business continuity, and you pay the money as per your convenience, whether it is a 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. So you have a product available at a subscription basis. And all the power of hybrid work environment which we have witnessed in the marketplace, the whole idea is that every single products we sell in the market, it really solves the problem of the collaboration, a seamless transition, and the personalization. You might have a customer, you might have a user who's absolutely focused on design. You will have a power user, you will have a very basic Excel user. You will have a devices requirement where you have to collaborate with your international customers who require a very sharp display, and that will require a high resolution camera also. So all the products which we innovate in the market and bring to our MSME customer is solving a 3 larger objective, which is a need of a business today, and ensuring the cost is optimal to the customer and it's affordable prices. The Z portfolio, which is available right now in a 2 form factor from an HP side. One is in the tower and second is the mobile form factor. So tower form factor is in the form of desktop, and then mobile form factor, which is in the form of notebook. Every single user who's focused on the designing, who is focused on the data science, who is focused on the heavy computing, who has a high graphics requirement, you have a solution available from an HP, which gives you discrete GPU for your requirement and is available at an affordable price in both the form factor, which is tower and the mobile. Our mobile workstation is spread across with the different sizes, whether there is a requirement of 14-inch screen, whether it's a requirement of 15.6 inch, whether there's a requirement of 17-inch screen size. And similarly on the tower desktop, if requires a different computing power like i3, i5, i7, i9, to a variety of computing with 16 GB, 32 GB memory, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB of graphics card, and the different OS, which is like an Ubuntu, Linux, and the Microsoft, every customization is possible to meet your business requirement. We did touch upon the pandemic has really taught us the world is going to be hybrid for everyone. What does it mean? That while the life has changed for all of us, but it has changed in reality forever. We don't see going forward across the vertical, wherever we talk to our large CIO customer, that the users are not willing to now operate from the office. It's going to be a 50-50, 60-40, 70-30. Depends on the environment they operate, depends on the business need, which means if you really have to continue with the hybrid work, which eventually is an advantage for a lot of MSME customer, how do you really take care of the security issues which you are going to deal with? The research says that 80%, 800% of the increase in the cyber attack and 70% of the successful, the data breaches we have seen, and 99% of the causes, it is primarily clicked by the end user. So while we take care of the opportunity which is available for our customer, we need to be really mindful for all the products you purchase to take care of your business need. With the last 30 seconds which I have, I just want to give one message to everyone that the way we have seen now, the India is growing at a worldwide level. We are talking about the organized economy and we are talking about the unorganized economy. The MSME is going to play a very vital role for the next level of India growth. And if the MSME has to grow to the next level, so trust me, it's just not because that I represent today the HP brand, the technology tools, the technology transformation, right technology is no more an option. You have to have right devices for your users. You need to have the right processes and tools to stay them more productive to ensure your business grows faster than your competition. Thank you so much for giving us this opportunity. It's a privilege to be here. Thank you. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Mr. Harsh Kumar Mehta, AGM, Punjab National Bank, Ahmedabad. And his topic is Fueling Manufacturing and SME Sector, Role of Punjab National Bank.
मंचासीन महानुभाव, हमारे आए हुए उद्योगपति, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मेरे बैंकिंग फ्रेटर्निटी के मेरे कलीग्स, इंश्योरेंस सेक्टर से ऑफिशियल्स, आईटी और बाकी सब मेरे साथ आज इस समिट में हिस्सा लेने वाले सहभागी, सभी को सर्वप्रथम मेरी तरफ से प्रणाम। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और एसएमई एसोसिएशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया जिसमें कि हम आप तक एक साथ पहुंच सकते हैं, पीएनबी अपना एफर्ट्स बता सकता है और आप लोगों के साथ जुड़ सकता है। पीएनबी निरंतर कोशिश करता है कि वो आपका प्रेफर्ड बैंक बने। पीएनबी की हिस्ट्री 127 साल पुराना बैंक है। 1895 में स्टार्ट हुआ और भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक। आज पीएनबी भारत में सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और आज का जो विषय है एमएसएमई, उसमें अगर मैं पिछले साल का परफॉर्मेंस पीएनबी का आपके साथ में शेयर करते हुए मुझे गर्व होता है कि लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से 3rd अवार्ड पीएनबी को मिला, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे एमडी सीईओ साहब को पर्सनली दिल्ली में कैंप दिया गया। और इसी एफर्ट में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं कि ये 3rd से हम 1st कैसे आए। आप लोग जो हमारे साथ में आज एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हैं, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज, कैसे एक छोटा सा बिजनेस कैसे बहुत बड़ा होता है। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बैंक का कहाँ रोल आता है। बैंक, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आपके 75% पार्टनर है आपके बिजनेस में। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमारे पास पैसा है और हम आपको उसे उधार दे रहे हैं। हम आपके साथ एक पार्टनर होते हैं। जैसा कि चंद्रकांत जी ने कहा था कि सोच, एक पैसा आपको जो बैंक जो सर्विस दे रहा है उसकी सोच क्या होती है, उसी सोच पे हमारा सारा कार्य डिपेंड करता है। एक ही काम को करने के 2 तरीके, जैसे आप दो आदमी करके काम करते हैं, एक आदमी ये कहता है कि मैं एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रख रहा हूँ और वही सोच के काम करता है, और दूसरा ये सोच के करता है कि नहीं मैं घर बना रहा हूँ। दोनों के कार्य तो सेम है बट सोच बहुत अलग है, और यही सोच जो है अंतर बनाती है। मैं आप लोगों को ये अश्योर करता हूँ कि पीएनबी आज इसी सोच से काम करता है। आज जो भी एंटरप्रेन्योर्स पीएनबी के साथ जुड़ते हैं, हमारी ये मनोकामना होती है कि हम उन्हें चरम पे देखें। आज 25 साल बाद में जब एंटरप्रेन्योर पलट के देखे तो ये बोले कि हाँ, पीएनबी से मैंने अपना एंटरप्राइज स्टार्ट किया था। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम लोग ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स इतना बड़ा होने के बाद भी बोलते हैं कि मैंने 10,000 से मेरा लिमिट स्टार्ट किया था और आज वो 10,000 करोड़ पे चलता है। वही हम लोग आप लोगों को भी अश्योर करते हैं, यही आगे भी पीएनबी की परंपरा रहेगी। और इसके लिए हम लोगों ने क्या कदम उठाए, उसपे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वह है कि हम आपको क्या प्रोडक्ट देते हैं, हम उस प्रोडक्ट को आप तक कैसे पहुंचाते हैं और उसको आपके साथ कैसे चलते हैं। इस राह में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसएमई, जैसा कि चंद्रकांत जी ने कहा था कि एमएसएमई पहले एसएसआई कहलाता था, बट बाद में उसे कहीं मिड कॉर्पोरेट का दर्जा दिलवाने के लिए एमएसएमई हमेशा स्ट्रगल करता रहा। बड़े कॉर्पोरेट्स को हमेशा एक अच्छे रेट पे लोन मिल जाता था, इजीली मिल जाता था, बिना कोलेटरल, कम कोलेटरल मिल जाता था। बट एमएसएमई जब भी जाता था तो हमेशा उसे एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि उसे एनबीएफसीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक उसका उस समय हाथ नहीं कर सकते। पर पिछले 10 सालों से ये सिनेरियो पूरा बदल चुका है। आज पीएनबी मिड कॉर्पोरेट सारे एंटरप्रेन्योर्स को एमएसएमई मान के 100 करोड़ रुपए तक का लोन देता है, जिसे हमने एक स्पेशलाइज्ड पॉलिसी बनाया। उस पॉलिसी के अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा, आप किसी भी तरह का आपका बैलेंस शीट होता है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें आपको बाकी सबसे एकदम परफेक्ट ही मिलेगा। एक बड़े इंडस्ट्रीज जैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एक एमएसएमई को भी देते हैं, और उसके साथ में कोलैटरल का रिक्वायरमेंट भी उस स्कीम के अंतर्गत में हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। आप जब भी आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट होगा, आप उस चीज को महसूस करेंगे। और फर्दर जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट के साथ में आपकी सारी चीजों का ध्यान रखा कि एमएसएमई को किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें बिजली का कमीशन, एलसी कमीशन,
सर्विस चार्जेस, सभी चीजों का ध्यान रखते हुए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाया गया। इस प्रोडक्ट को हमने फर्दर रिफाइन करने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आजादी का अमृत महोत्सव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी थीम को आगे ले जाते हुए क्लस्टर्स डेवलप किए। क्लस्टर जैसे आपने देखा मॉर्बी हमारा क्लस्टर है, टेक्सटाइल सूरत हमारा क्लस्टर है, ऐसे कर हमारे 83 क्लस्टर्स ऑल ओवर इंडिया। हम उस एरिया का स्पेसिफिक उस एंटरप्रेन्योर का रिक्वायरमेंट को जज करके, उनसे फीडबैक लेके और उस प्रोडक्ट को डेवलप करके वहां पर उनको उसी टाइप का प्रोडक्ट देते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि हर एक एमएसएमई, हर एक इंडस्ट्री का एक अलग फाउंडेशन है। हर एक बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कहीं आपको दिखता है कि रिसीवेबल ज्यादा होते हैं, कहीं आपका बाजार में लेन देन ज्यादा होता है, कहीं स्टॉक का होल्डिंग ज्यादा होता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हर क्लस्टर, हर इंडस्ट्री के लिए एक अलग प्रोडक्ट बनाने का कोशिश किया है और आगे भी हम लोग इस चीज को जारी रखेंगे। अब ये प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन गया, अब ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा कैसे, उसको पहुंचाने के लिए हमने अब स्ट्रक्चर डेवलप किया है। मिड कॉर्पोरेट सेंटर्स बनाए गए हैं स्पेशल, जिसके अंदर आपके हमारे स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, जो आपको डेडिकेटेड टीम होता है, दे आर हाईली नॉलेजेबल एंड उनका काम ही यही है कि वो आपको सपोर्ट करें। वहां पे आप लोगों को डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स दिए जाते हैं और आप किसी भी हमारे ऑल ओवर इंडिया इस तरीके के 116 सेंटर्स काम कर रहे हैं। गुजरात में 14 सेंटर्स काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में 2, गांधीनगर में 1। सो दैट वे प्रोडक्ट एंड उसका डिलीवरी। देन कमिंग फर्दर, जैसा कि बात हो रहा था कि जनरेशन गैप, जनरेशन के बाद में जो स्मार्ट इन्वेस्टर, यंग एंटरप्रेन्योर, उनके लिए भी बैंक ने अपने आप को पूरा मोल्ड करते हुए डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है। हमारे सारे प्रोसेस अब डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, इवन प्रोडक्ट्स भी डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। आप लोगों को मैं यहाँ प्रोडक्ट पे आके, हमारी टीम पे आके आप कहेंगे कि अब मैं कैसे इसमें इंटीग्रेट करूंगा। सो आप जब इस प्रोडक्ट और मेरी टीम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप वो अपने एक एसएमएस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे PNB One ऐप के थ्रू डाल सकते हैं। हमारा टीम आपको ऑटोमेटिकली रीच करेगा। सो इसके साथ में फर्दर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम ये तीनों चीजों को एसिमुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोसेस टाइम होता है वो कम हो जाता है। सो मैं जहां तक आज तक जान पाया, एक बिजनेसमैन की यही रिक्वायरमेंट होती है, टाइमली पैसा दिया जाए, अच्छे रेट पे दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी भी दिया जाए, उसे बताया जाए कि उसका काम कब होगा। सो हम सुनिश्चित करते हैं ये पूरे सिस्टम में कि PNB आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे और आपका प्रेफर्ड बैंक बन के बाहर आए। और इसी निवेदन के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि PNB इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग कभी भी हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों का जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं। आप यहाँ पे कई लोग इंडस्ट्री से हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन से हैं। अगर इंडस्ट्री एसोसिएशन में आप लोगों का कोई विशेष रिक्वायरमेंट है, वो भी आप कभी भी PNB से आप बोल सकते हैं। वी कैन डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर यू, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो आपकी नीड्स को कैटर करता है और उसके समय पे उसको मॉडिफाई करके आपके हिसाब से चेंज किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से नेक्स्ट ईयर PNB को हम फर्स्ट अवार्ड दिलवाएंगे नेशनल एमएसएमई में। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Bhavin Thakkar, Global Account Director, GoTo.com, and his topic is Digital Workspace Transformation for SMBs. Can we have a huge round of applause for him? Thank you. मेरा नाम भावेन है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ। मैं गुजराती हूँ, मूल निवासी कच्छनो छू, पण हमना हाल में बैंगलोर 27 વર્ષથી ત્યાં છું ને બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર અહીંયા આવવા માટે ને મને ચાન્સ આપવા માટે મારી કંપનીની બારેમાં વાત કરવા માટે। તો હવે ગુજરાતીથી હિન્દીમાં શિફ્ટ થઈશ ને ઇંગ્લિશમાં પણ શિફ્ટ થઈશ। તો મારો સાથ આપજો જરા। અમારો બૂથ ત્યાં છે, તો મારો જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન થઈ જાય એના પછી તમને કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય, મારા કલીગ્સ પણ ત્યાં છે, હું પણ હોઈશ ત્યાં, આવી જજો ને હવે વાત કરશું। સો
just to let you know what has happened in last 2 to 3 years, what we are seeing now is a world which is uneasy. आज हर जगह आप देखेंगे पैंडेमिक से जो चालू हुआ, उसके बाद जो रशिया का वॉर हुआ और उसके बाद जो रिसेशन अब हम देख रहे हैं ग्लोबली, लोग बात कर रहे हैं कि रिसेशन आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। आपके सबसे ज्यादा मार जो पड़ती है महंगाई की या इस तरह के प्रॉब्लम्स की, वो पड़ती है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज ऑन एमएसएमईज। और क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम होता है, बजट्स कम होते हैं और आपको आपका बिजनेस चलाना है एफिशिएंटली। वैसे हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि कैसे एफिशिएंटली आप कर सकते हैं, तो आज के डेट में आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, टूल्स यूज करने पड़ेंगे जो आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सके। जैसे मिस्टर चंद्रकांत ने भी बोला था कि आपको आज आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते, आपको टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और आज के डेट में हम आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेंगे जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे एंड विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आज वर्क प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आज आप देखेंगे तो आपको आपके कस्टमर्स के साथ में कनेक्टेड रहना है, आपको आपके एम्प्लॉइज के साथ में कनेक्टेड रहना है। आज कहीं पे लॉकडाउन हो जाता है, कुछ आपके नेचुरल कैलामिटीज हो जाते हैं, आपका बिजनेस रुक नहीं सकता। आज वॉर है कहीं पे, आपको आपके कस्टमर से बात करना है, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, आप क्या करोगे? तो आपको आपके कस्टमर से और आपके खुद के एम्प्लॉइज से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो टूल्स है आपको वो एग्जैक्टली वो चीज करने में हेल्प करते हैं। और मेरे को बोलते हुए खुशी हो रही है, आई वाज जस्ट शेयरिंग दिस विद माय fellow member here, Mr. Ashish, that HP uses our products to support their end customers. I'll show you which product is that, but उससे पता चलता है कि एक ग्लोबल कंपनी जब हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके सपोर्ट कर रही है तो हाउ वी कैन डू इट। ही वाज राइटली टॉकिंग अबाउट द टूल्स व्हिच कैन एनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अभी आज के डेट में आपकी भी आईटी टीम होगी, आज हर एक के पास लैपटॉप है, आपके नेटवर्क हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है और हर किसी की जरूरतें अलग है आपको। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में आपको कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप पेपर बिल्स पे काम नहीं कर सकते। जीएसटी लागू होने के बाद पूरा आपका जो बिलिंग सिस्टम है वो सब चेंज हो चुका है, आपको हर टाइम ऑनलाइन अपडेटेड रहना पड़ता है। तो आपके जो आज आप कहीं पर भी बैठे हो, आपका आईटी वर्कलोड इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है। कोई गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे इस पोर्टल में आओ, आईटी डिपार्टमेंट बोलता है इस पोर्टल में आओ। आपका आईटी रुक नहीं सकता, इट कैन नॉट जस्ट स्टॉप वर्किंग। अगर आपका आईटी ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे और उसका वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं उस चीज में, आपको हेल्प करते हैं, आपका आईटी हमेशा आपका जो अप टाइम है वो बना रहे और आपको जो आपकी एम्प्लॉय की एफिशिएंसीज बढ़ती रहे और आप आपके कस्टमर्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सके और आपके एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। सो जस्ट हमारी कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। आपने नाम, ये हमारा नाम जो चेंज हुआ वो गोटू करके चेंज हुआ इस फरवरी में। इससे पहले हम वी वर कॉल्ड एज लॉमीन। 2003 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी बॉस्टन में और हमारा सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट था उस टाइम का था वो रिमोट एक्सेस का था। हमारे जो फाउंडर थे वो रिमोटली किसी को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया कैसे एक एंड कस्टमर को वो वहां से सपोर्ट कर सके दूर से। सो उस आइडिया को लेके उन्होंने कंपनी बनाई। फिर हम लोगों ने सोचा कि हाउ वी कैन इंक्रीज कोलैबोरेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द कस्टमर्स। तो हम लोगों ने कुछ कंपनीज अक्वायर की अक्रॉस द ईयर।
गो टू मीटिंग करके आपने नाम सुना होगा शायद, और वेबिनार या ट्रेनिंग्स आपको करना है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने एक्वायर किए और कंपनी बनाई थी लॉगमी। अब उसका नाम हो चुका है GoTo फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे। अब हम उनको सिंप्लीफाई करके 2 प्रोडक्ट्स में लाए हैं और वो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को स्केल करने। और हमारी इंडिया स्टोरी ऐसी है, हम यहाँ पे 11 साल से हैं, हमारे पास 45 प्लस SME पार्टनर्स हैं और 2000 प्लस SME कस्टमर्स हैं जो हमको ट्रस्ट करते हैं। और हमारी इंजीनियरिंग एंड R&D सेंटर बैंगलोर में है एंड हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में डेवलप होते हैं आज के लिए, और ये संख्या बढ़ भी रही। So what is GoTo? So GoTo is an all-in-one solutions for all essential connections. Essential connections मतलब आप अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट करते हैं, आप अपने एम्प्लॉइज से कैसे कनेक्ट करते हैं, how do you solve their problems with 99.999% ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी ऑलमोस्ट आज तक वैसा डाउन टाइम नहीं हो, आप काम कर रहे हो और सडनली बंद हो गया, ये नहीं होता। और हम 100% SaaS कंपनी है। आपको हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, HP का लैपटॉप और उसमें इंटरनेट कनेक्शन, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू आवर प्रोडक्ट्स एंड वर्क, राइट। सो वी कीप इट वेरी सिंपल। हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं, हमारे पार्टनर्स भी इधर आए हुए हैं, आज 2 हैं, हाथ खड़े करिए, जस्ट टर्न एंड सी, या थैंक यू फॉर कमिंग। और उन्होंने हमारा GoTo का टी-शर्ट भी पहना, वो शर्ट दूसरी कुछ पहन के आए थे, आज यहाँ पे आके उन्होंने चेंज किया, थैंक यू फॉर दैट। सो हमारे अभी 2 प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली वी कॉल इट एज GoTo Resolve एंड GoTo Connect। GoTo Resolve है आपको IT में सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें है रिमोट एक्सेस, जैसे मुकेश भाई अनिल भाई से मिलने गए और उनको उनके घर के PC में से कोई फाइल निकालनी, वो कैसे करेंगे? तो कोई भी आप लैपटॉप लीजिए, हमारा एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है, उससे आप अपने घर के सॉफ्टवेयर घर के PC में लॉग इन करिए और वो डॉक्यूमेंट आप ओपन करिए एज इफ यू आर सिटिंग ऑन दैट PC, राइट। उतना सिंपल है ये। और आपकी IT टीम है, आपके पास 5 क्लाइंट्स हैं, आपकी IT टीम आज आपके जो प्लांट में आपके MD के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो आपका IT का बेस्ट इंजीनियर मोरबी के बजाय राजकोट में है, तो वो राजकोट से लॉगिन करके मोरबी में जो PC है उसको ठीक कर सकता है। सो वो हम आपको सॉफ्टवेयर देते हैं। सो रिजॉल्व आपको उस तरह से हेल्प करता है, इसको बोलते हैं रिमोट सपोर्ट। और IT में जो आपको चाहिए, जैसे टिकटिंग वगैरह की, आपके कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने सॉल्व हुए, और आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो हम आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं विद द सॉफ्टवेयर, जो एक SME के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी बनी ही इसलिए है कि हम SMEs को सपोर्ट कर सकें, and it has been doing it. Not that we do not support enterprises, but we have products which are meant for SMBs especially, and we focus on that. So, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, on the right hand side you see the GoTo Connect part. यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स करनी है, जैसे आप कुछ मटेरियल आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कस्टमर को आपको ट्रेन करना है, तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। आप मल्टीपल कस्टमर्स पे एक साथ ट्रेन करना चाहते हैं, या आपके प्रोडक्ट के बारे में आप 20 लोगों को बताना चाहते हैं, जो नटवरलाल भाई भी बोल रहे थे कि आप यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी टू डू ऑल ऑफ दैट। आज आप यहाँ पे बैठे 20 लोगों को आप पिच कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के टाइम में। तो ये प्रोडक्ट जो GoTo वेबिनार है वो हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद GoTo Connect। तो इससे आपका एफिशिएंसी जो है बढ़ता ही जाता है और आपके कॉस्ट्स कम होते जाते हैं। हमारा फोकस उस चीज में है। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी जस्ट एक ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कस्टमर्स कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आपको यहाँ पे पता होंगे कि वो कौन है। HP is one of our biggest customers, as I mentioned, and then Wipro
और जो बाकी या हमारे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करने के लिए भी हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट? सो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं लाइव लेंस। ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। It uses your mobile phone to see what your customer is seeing and support them. So suppose आप आज एक मशीनरी बनाते हो और उसको आप एक्सपोर्ट करते हो, आज आपको उसको सपोर्ट करना है कस्टमर को, और आपका कस्टमर फोन करता है कि मेरा ये मशीन काम नहीं करता, तो आप उसको वहां भेजने से पहले आप ये देख सकते हो कि वो मशीन में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आप उस कस्टमर को गाइड कर सकते हो कि कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। ओवर एन एनोटेशन आप उसमें ड्रॉ करके उनको बता सकते हो, और ये सारा आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ताकि आप अगर सेम प्रॉब्लम आए तो आप अपने सपोर्ट टीम को या अपने जो इंजीनियर्स आप उनको बता सके कि आप इसको देखो और ये देखिए कि लास्ट टाइम कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, अब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये आपको हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जीरो मोटरसाइकिल्स बोल के, ये इलेक्ट्रिकल बाइक्स बनाते हैं। तो आज एक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का बहुत चलन है, और गुजरात में एज आई नो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग ई बाइक्स एंड सेलिंग इट अक्रॉस द ग्लोब एंड इन इंडिया। तो आज आप उनको सपोर्ट करना है, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइज्ड भी होता है। आज इट इज नॉट कि वो मैकेनिकल डिवाइस रह गया, अब वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी हो गया। The bikes I'm talking about. Why I'm calling it a device is because there is some amount of intelligence in that electric bike. So आप उसको दूर से देख के इस तरह से आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस को क्लेम को प्रोसेस करती है हमारा टूल्स यूज करके, उसका नाम है एंडस्ले इंश्योरेंस। So if you are in such businesses which requires you to travel to do something, you can do that before traveling and save a lot of cost for you. I have a video. I'm not sure whether it will be with the video. Can I? Okay. Today, we're taking a look at how Rescue Lens can be अभी used to guide आपको customers पता चलेगा ये कैसे काम करता है। With Lens, technicians can extend their reach and uncover the source of an issue as though they were actually on site. Once in a session, technicians can chat with the customer as well as use predefined replies to help save time. By using the camera on the customer's mobile device, technicians can see the issue and evaluate the situation without ever leaving the desk. In this example, we can see that a customer has experienced an error message. By using a Rescue Lens, the technician is able to see what's on the screen, troubleshoot the issue, confirm the source of the problem, and determine the best course of action. Here, we can see that the technician is able to use the whiteboarding feature to help show the customer what needs to be done. With the power of Rescue Lens, technicians can minimize truck rolls, reduce product returns, and help customers set up and adopt complex products. If you have any questions, please feel free to view the Lens documentation or contact customer care at help.logmein.com. और बिना ज्यादा टाइम लेते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, मेरा टाइम ऑलमोस्ट अप है। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप उधर आइएगा, मैं वहां पे रहूंगा, मेरे कलीग्स भी हैं, विल टॉक टू यू एंड हेल्प यू आउट विद योर बिजनेस प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Next, I would like to invite Mr. Pramit Joshi, Senior Director, Credits. His topic is Achieve Rapid Growth of Business with Domestic and Exports Supply Chain Finance. We'll be taking Q&A session after this session. Thank you. Hi, good morning all, and thank you. I'm Pramit Joshi from Credits, who Rajkot Tichu, born and brought up in Bombay, Gujarati, and honored to be part of this conference. It is really heartening to be here always in Ahmedabad, in Gujarat, all the industrial manufacturing units. And the discussion that I want to have today is in terms of exports growth and SMEs.
how is financing the bottleneck and how we are solving for it. So background wise, who pote banker chu, I have worked in banks for about 15 years, different banks. Started my career with Yes Bank, IndusInd, Citibank. Then I had my own startup in Singapore for exports factoring, which now is part of a larger startup, Moglix. Moglix is a unicorn startup now. We have raised more than $500 million of equity capital. So traditionally, if you see business and finance કેવી રીતે કામ કરે છે, that how it happens is that you go to a customer and the customer gives you an order. Customer आपको order देता है. It can be a buyer that you have in India. It can be a buyer that is overseas. So there is a separate negotiation that you do with the customer, that what will be the price of the products that you're going to sell, what will be the commercial terms, delivery schedule, quality, everything. And then as an SME, you come back and then there is a separate challenge that is initiated, that how are you going to finance to build for that order, and if there is a credit period, how are you going to hold on to that credit period? And the bigger challenge always is that आप अपने customer को trust कैसे करोगे कि अगर आपने credit पे माल बेचा तो उसका पैसा आपको टाइम पे मिल जाएगा. So these are two different challenges, and time and again there have been multiple government schemes. There have been a lot of ways in which banks also have been trying to solve, but there are issues, bottlenecks, and we all know that there is a huge gap in SME financing. So what we are trying to do is we are trying to look at commerce and financing as a single transaction. We are trying to marry the two, and that is what is supply chain finance. That the day you get the order, you don't really have to worry how are you going to finance it. There is a company which is right there, which will give you money to buy raw material, which will give you money to give credit period to the customer, and which will also ensure that if the customer doesn't pay, you will get paid. That's the beauty of factoring or a supply chain finance solution that comes in, that your responsibility is only to ensure that you deliver goods of the stated quality that is agreed with the customer as per the contract, and the supply chain finance company, which is Credlix, is going to take the responsibility that you get paid on time. And this is not a new concept. This is an age-old concept. This is what I'll show you. The statistics in terms of what are the factoring volumes in China, what are the factoring volumes in Europe, and where as India we are, which is 1% of some of these markets. So quickly, I'll just give you a background about Moglix and Credlix. So Moglix is the commerce business and Credlix is the financing business. These both are same companies, only the brand names are different. As a commerce business, we are Amazon or Flipkart for manufacturing companies. So you can go on moglix.com and buy any spare part, electrical cables, labor safety kit, consumables, fasteners. There are more than 50,000 SKUs available on Moglix. As a factory purchase manager, you can buy these products online and it will be delivered to your factory. We are a 7-year-old organization. We are invested by some of the global investors in the world today, including IFC, Sequoia, Tiger Global. We raised about $470 million. We are a team of 470. We are a team of 1,500 people in the country, and we have supplies today to more than 3,000 large factories, and we buy from 20,000 SMEs. So the other side is we are a digital technology manufacturing platform where you can also sell to Moglix. So that is a different business, but today I am here to talk about Credlix, which is the supply chain financing business of Moglix. And these are some of the investors. Mr. Ratan Tata was one of the first investors in our company when we started. So as Credlix, we today have supply chain financing to more than 3,000 SMEs. We are present in 4 countries, India, Middle East, Singapore, and US. We work with today more than 100 exporters and 3,000 SMEs, and we finance them on pre-shipment as well as post-shipment, and we take cover on the buyer non-payment risk. So, and this is something which is over and above your bank limits, how you can avail supply chain finance. So I'll just come to that in terms of numbers, where we are as India. So what happens in factoring is, and especially in Gujarat market, I have covered it as a banker. I have also covered other markets.
The misconception that a lot of promoters have is that I am taking a bank loan. I really don't want to look at factoring. I'm good with my bank limits. However, there is a fundamental difference in terms of what factoring does vis-a-vis what loan does. When a bank is giving you a loan, it may be a loan which usually is backed by collateral for SMEs. And even if it is not backed by collateral, when the bank is giving you a loan, that loan has full recourse on you. So whatever happens to the goods that you have supplied, you have your inventory, the buyer doesn't pay on time, the bank is going to ask you to repay on due date. There are multiple implications in terms of you getting reported as a defaulter, you getting qualified as a delayed payment in your CIBIL score, and there are multiple other issues as a company, as a promoter, especially when you take bank loans, you usually will end up giving personal guarantees. So that's the loan aspect of it. And whenever you take a loan, it's your balance sheet which shows that there is a liability that is coming on your loan. When you take factoring, the factoring company is ensuring you two things. So one is that today, when you are selling to a buyer overseas, you haven't, generally, there may be buyers which are old and you know them, you have met them, they have met you. But there are a lot of cases, especially in pandemic, where buyers are new, you want to grow, but you don't know whether you should be selling to that buyer on credit or not. And similarly, there is an issue where the buyer doesn't trust the supplier and he doesn't want to pay advance. So that's where factoring companies come in, while letter of credit is a tool which is there, but that again is very different in larger transactions. It is not usually provided by buyers, where buyers if it is new or large and the supplier is small, and we have seen many cases where LC is not available. And even with the site LC, there is a risk that you will send the goods, and what if there is a discrepancy that happens in the LC? For factoring, what happens is, and what we do is, we have credit insurance and relationships with banks, with factoring companies across 90 countries. And we will give you a credit report of the buyer, that if you are applying for a limit against the buyer, if you want to do exports, then whether the factoring company is ready to take the risk of buyer non-payment or not. That is the first starting point, कि आपके buyer ने अगर पैसा नहीं दिया, factoring company आपको 90% of that value दे देगी once you give the bill of lading to the factoring company. As in, you just give a copy bill of lading on our portal and you will get paid 90% of the value of the shipment. So your risk as a SME of buyer not paying is off your head. You are not worried कि buyer ने पैसे दिए नहीं दिए. अगर factoring company ने approve किया है, तो आपका buyer अगर credit period भी मांग रहा है, आप credit period भी दे सकते हो, और आपको risk भी नहीं है वो buyer नहीं pay करने का. And that is one of the reasons why, if you see 1990s से and late 2000s से जो China के exports grow हुए हैं vis-a-vis India, the availability of factoring in these markets is very deep. There's a government company, Sinosure, which, if it provides insurance, getting bill discounting against that insurance is very easy. So in fact, I had to discuss this with colleagues, where we had a discussion in the morning कि ECGC भी आपको cover देता है 75%, 80%, 90% का. But ECGC cover is very different than factoring. ECGC cover, अगर buyer ने पैसे नहीं दिए, आपको 3 महीने 6 महीने लगेंगे वो पैसा claim करने में. बट आपका जो बैंक का वर्किंग कैपिटल लिमिट PCFC DSFC ड्रॉन होगा, वो ओवरड्यू हो चुका होगा. यू विल हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट. ECGC का पैसा आएगा तो आप बैंक को दे दीजिएगा, बट नहीं आया तो आप ही को देना है, और वो आपको पूरा क्लेम फाइलिंग करना है ECGC से पैसा लेने के लिए. Whereas the factoring company is going to pay you 90%, the headache is not yours then to recover the money from the buyer. And that's one of the reasons why China could push such export growth, because financing was available a lot more easily than India. Today, China does about $400 billion plus of factoring annually, which is largely MSME driven, and India does less than $4 billion. So that's the kind of gap which we are trying to bridge. We, as a commerce company, Moglix, and a supply chain finance company, Credlix, we are trying to marry this together. कि आप order लीजिए, and then everything else is something which the factoring company will be able to manage your risk and give you the necessary liquidity. So happy to discuss. I'm around for the day. We have an office in Ahmedabad. We have office in about 40 cities in India today, and have been working with a lot of MSMEs and spreading awareness of this product, where
Usually in Gujarat, especially, we have seen promoters are conservative in terms of, don't nathi joti dhando karwa mate. हमें तो हमारा पैसा नहीं धंधो करसू. So this is not loan. That's exactly. This is like you are not taking a loan. You are finding a buyer who's going to pay you much earlier and not take the responsibility of a buyer not paying on time. So this is how the process is. We can go into these details. One more feature which I wanted to mention is we not only provide post-shipment finance, which is financing after the shipment is done. If the buyer is approved by us and the supplier is something which is an existing relationship for us, we can also provide 40% of value of the order as pre-shipment finance to grow your business. And there is another option. Moglix, being a commerce company, we supplying industrial goods, raw materials, right from steel, polymer, a lot of these basic raw materials also. You also have an option of buying this raw material credit from Moglix. The benefit here is the cost will not be, because Moglix aggregates this. Moglix does more than $1 billion of these supplies. We are aggregators, consolidators, and there are SMEs where I'll give you a case study in one of the cities in South. What we have done is the association there had a specific requirement for buying a specific category of raw material which need to be imported from China. We are actually aggregating demand for that raw material and supplying it to the Credlix approved SMEs because we know that the buyers there are going to be discounted by Credlix. So that's how we are helping SMEs achieve growth. The process also that we follow is pretty simple. There is no security, no collateral, etc. that is required to avail supply chain financial credits. And we are working today with more than thousands of buyers globally. And we'll be happy to explain more about this and take any questions. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Rajendra Manpande, General Manager, NBG Gujarat, Bank of India. And his topic is finance and investment for the growth of SME and manufacturing sectors. Can we have a huge round of applause for him? नमस्कार, मैं आर्यम पांडे, जनरल मैनेजर गुजरात बैंक ऑफ इंडिया। जैसे गुजरात के लोगों को ये पता है कि हमारी बैंक ऑफ इंडिया 1921 से जो टाटा की बैंक थी, गुजरात में इसका प्रेजेंस है। जो आज हमको सब्जेक्ट मैटर दिया गया है वो है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ SME एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं इंटरप्रेन्योर हैं, इंटरप्रेन्योर्स के एसोसिएशंस एंड रिलेटेड जो उनके फोरम्स हैं उसके लोग बैठे हैं, सारे ज्ञानी लोग मेरी नजर में।